All of you please sit down.
Your claps should be louder. Your claps should speak. Come on. We accord a very warm welcome to our most respected founder director, ma'am. Thank you, ma'am, for your benign presence. Come on, a huge round of applause for our respected founder manager, ma'am. Founder director, sorry, I beg your pardon. Our dear mothers are being gifted with a small token of love, a small gift. Very true, which has been said by dear mothers, that they play a pivotal role in a child's life, the backbone of a child. She is emotional, she is real, but yet she is the rock. Tired, but keeps going. Worried, but full of hope. Impatient, yet patient. Overwhelmed, but never quits. Amazing, even though doubted. A life changer every single day. Truly said, the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. Can we have a huge round of applause, a thunderous applause? Come on. To all the mothers who are present here today in the auditorium. A mother has a decisive influence on the future direction of the children because they are considered to be the first mother of a child. She trains the child at home how to behave in the society because they raise and nurture the future generation and even molds the child into a great leader. A great moment for the mothers. Their photograph is being clicked with our most respected founder director, ma'am. I think you are so carried away that you forget your part. Come on, resonate the hall with the claps. Wonderful. Thank you, dear mothers. Family, especially mothers, and community engagement greatly improves the performance and achievements of the learners. Next coming up is the most awaited event of the day. Yes, ladies and gentlemen, the procession. I now request our guest of honor, Ms. Shweta Vishnoi, the proud mother of Ms. Tanushree Vashne, to please come up on the stage to take the guard of honor. Please come, ma'am. The marshals, Aryan and Rubian, please accompany, escort ma'am to the stage. I also request our most respected founders to kindly come up on the stage to take the guard of honor. Our most respected founders, that side, that side. Aryan, you may come down.
She's the proud mother of Miss Tanushree Vashne, ma'am. And she's attained All India rank 4 with 99.2% this year. And is the board topper of CMS RDSO campus 2023. 99.2%, yes ma'am. Aryan and Rubian, founder manager sir, founder director ma'am also. Please escort them to the stage. Here comes the procession. Can you hear the band? Can you hear the band? Yes or no? Yes? Come on, I want to hear you, audience. Yes? Louder. Yes. At CMS, spirit is nurtured by an inspiring school environment. We believe that spiritual understanding combined with reason expands a child's ability to perceive, empathize, and comprehend. We believe in unity of hearts, and we believe in Jai Jagat. Jai Jagat. Ladies and gentlemen, hold your breath to see this unique procession. The band bearing the message of international peace and unity. Here comes the beautiful and scintillating procession. The procession is being led by the respected principal of City Montessori School, RDSO campus, Ma'am Jyotsna Atul, followed by the pre-primary, junior and senior section in charges, followed by the world citizens, symbolize a world without walls. Next we have the world judiciary, dressed in black gowns, depicting the legal luminaries, representatives of world peace. Next we have the all religions, the children. They are followed by the representatives of different religions, and follows the principle followed behind this motto on the ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The earth is but one country and mankind its citizens. Followed by the ever cheerful, the ones who will spread the word of yoga. Come on. Such colorful dresses and bidding goodbye to all of you. Such smiling, enthusiastic faces. Followed by the children of Kawali. Next in our line of vision are the state dancers from Rajasthan and Punjab, followed by our dearest mothers. Such a nice, wonderful, beautiful scene to see. Mothers in pink and blue. And they're so happy to be here. We have, followed by the mothers, we have the board topper of 2023, Ms. Tanushree Vashne, followed by the meritorious students. We can have a louder round of applause. They do deserve more louder. Come on, parents. Yes, louder. Next in our line of vision are the flag lines. The children who are holding the flags of different countries. We may belong to different countries, but we are still tied with the thread of unity, peace, love, and compassion. A huge round of applause for the wonderful procession. I can't hear you. Can it be louder? More louder.
people are wonderful. May this world be united with the word of love, compassion, hope, love, peace and unity. I request ma'am, Ms. Shweta Vishnoi, to please kindly come down. Thank you, ma'am. Education should align the true nature of an individual with the spiritual being of man. City Montessori School believes that the purpose of spiritual education is to help children develop their own individual personal qualities that will help them to become valued members of the society. Coming up next is a mock World Parliament session in which we will deliberate upon the following agenda: role of spiritual education in the 21st century, to create a prayerful atmosphere at home, and importance of family consultation. It's a humble request, dear parents, if you can be quiet, we can proceed further. I hope you all understand this sign. This means to be quiet. Thank you. Spiritual education to bring about a holistic development in children. Domains of spirituality and their importance. Coming up before you, the World Parliament. Spirituality is about self-discovery, embracing your uniqueness and recognizing that you are connected to something greater than yourself. The interdependence of all humanity and the environment is emphasized in spiritual education. It encourages empathy, inclusivity, and tolerance for diversity while cultivating a sense of global citizenship. Spiritual education can promote a more tranquil and harmonious society where young people actively engage towards justice, equality, and sustainable development by recognizing our shared humanity. Respected members, I, the Speaker of the World Parliament, as the presiding officer, welcome all the members to this session of World Parliament. World Parliament is an international parliament or supranational legislature set up to discuss world problems and probable solutions, as the world is but one country and we are its citizens. The first topic on our agenda is role of spiritual education in the 21st century. Member nations, please volunteer. Member nation USA, you may take the floor. Thank you, Speaker Sir. Man is in reality a spiritual being, and only when he lives in his spirits is he truly happy.
The purpose of spiritual education is to fulfill the divine potential of children and to prepare them for life by giving them the tools they need to keep on learning throughout the many experiences that will come to them. Today, the world not just needs good doctors and better engineers, but the hour calls for exceptional excellence alongside a philanthropic zeal to uplift the impoverished and helpless. Our country is privileged to have the Bill and Melinda Gates Foundation to elevate the lives of millions through their endeavors of generosity. No one has ever become poor by giving. One must think of giving not as a duty, but as a privilege. The hands that serve are holier than the lips that pray. Thank you, Member Nation USA. The real spiritual progress of the aspirant is measured by the extent to which he receives inner tranquility. It is divinity that shapes not only your ends, but also your acts, your words, and thoughts. If spirituality is embraced into our educational system, our students will surely emerge as being holistically ingrained, not just to make a difference to them successfully, but also to build a nation inwardly and outwardly strong and capable to meet the challenging times ahead. Member nations, kindly volunteer. Member Nation South Africa, you're recognized. Thank you, Speaker Ma'am. Our progeny is the driving force of our nation, but if it is adversely diverted, it will surely cast dark clouds on future of our country. It is the inculcation of spiritual education which eventually culminates into global citizens to lead the world. Spiritual teaching is a kind of teaching that seeks to attain higher levels of awareness and meaningfulness of life, which regardless of the content of education is the same path of development of ultimate goals leading to spiritual awakening. It explains the actual purpose of life for the person. The path to spiritual enlightenment has never been easy in this materialistic life. Spiritual education is not a distinct and separate discipline. It is part and parcel of all types and levels of education. In fact, it is the very foundation on which a lasting edifice can be built. Thank you, Member Nation South Africa. These values must be instilled during infancy to ensure bountiful versatility. It is not only charity, but the other equally indispensable virtues which are adequately fostered at home. Elderly play a crucial role in setting forth tenets of morality, and parents accelerate the pace. Moving on, the next topic on our agenda, to create a prayerful atmosphere at home and importance of family consultation. Member nations, please volunteer to elaborate on the same. Member nation Spain, you may take the floor. Thank you, Speaker Sir. It is through prayers for guidance, help, and strength that we give permission for His guardian angels to guide us in better ways. Prayers strengthen our family, and when we pray together, our family becomes more patient, kind, humble, and forgiving. Families use prayer time as a way to transmit the religious traditions to younger generations. It also enables family members to address problems and stresses they are facing, as well as reduces tensions in their relationships. Prayers help family members bond with one another and create a sense of family unity. They should believe that the purpose of our life is to know God and to worship God. Thank you, Member Nation Spain. You have rightly expressed your views. Consultation bestows greater awareness and transmutes conjecture into certitude. Moving on with the proceedings, I now invite Member Nation Australia to express his views. Thank you, Speaker Sir. No man can attain his true station except through his justice.
No power can exist except through unity. No welfare and no well-being can be attained except through consultation. Man must consult on all matters, whether major or minor, so that he may become cognizant of what is good. Consultation gives him insight into things and enables him to delve into questions which are unknown. The purpose of consultation is the process of discussing something with someone in order to get their advice or opinion about a thing. True consultation is spiritual conference in the attitude and atmosphere of love. Members of a family must love each other in the spirit of fellowship so that good results may be forthcoming. Thank you, Member Nation Australia. Truly, the foundation of true consultation is love and fellowship. Member Nations, kindly voice your opinion on the same. Member Nation Cuba, you're recognized to share your views. Thank you, Speaker Ma'am. The prime requisites for consultation, according to me, are purity of motive, radiance of spirit, detachment from all else save God, attraction to His divine fragrances, humility and lowliness amongst His loved ones, patience during difficulties, and servitude to God. It is important to realize that the spirit of loving consultation is very different from the current decision-making processes in the world. When meeting for consultation, each must use perfect liberty in stating his views and unveiling the proof of his arguments. If another contradicts him, he must not become excited, because if there is no investigation or verification of matters, the agreeable view will not be understood and discovered. Thank you, Member Nation Cuba. With these thoughts, I would like to move on to our next agenda, amalgamation of spiritual education in school curriculum. The purpose of spiritual education is to teach children to have high aims and noble thoughts. Unless education results in the appearance of spiritual characteristics and virtues, it is useless, even harmful. Now I would request member nations to raise their placards. Member Nation France is requested to take the floor. Thank you, Speaker Ma'am. Knowledge is praiseworthy when it is coupled with ethical conduct and a virtuous character. Otherwise, it is a deadly poison, a frightful danger. Therefore, the task of modern educators is not to neglect deserts, but to irrigate deserts and sow the seed of fertility. Irrigating deserts involves nurturing students and instilling a hope that there is meaning and purpose of human existence. Thank you, Member Nation France. Truly said. Now we need educators who should impart material, human, and spiritual education, and schools must act as the lighthouse of the society. Moving on with the proceedings, the next topic on our agenda is spiritual education to bring about a holistic development in children. Member nations are requested to voice their opinion on the same. Member Nation India, you are recognized. Thank you, Speaker Ma'am. The spiritual education of children must enable them to discern the interdependent, complex relationship between humanity and of the world of nature. Children need to be trained lovingly to demonstrate good manners and praiseworthy virtues. Spiritual education programs must prepare children for the service of the world. Holistic education is an approach to learning in which the process involves educating children with the inclusion of aspects that are necessary for the development of the mind, body, and spirit. It emphasizes the development of the whole person, intellectually,
emotionally, physically, and spiritually. Thank you, Member Nation India. Spiritual education must commence from the beginning of life. During infancy, children should receive bountiful love, begin to understand and practice standards of excellence to begin their spiritual education. Member Nations, kindly raise your placard to elaborate on the same. Member Nation Singapore, you may take the floor. Thank you, Speaker, sir. The formal education of children should begin when they have developed the ability to make distinctions. Childhood is a period of construction, vigorous growth, and learning. Spiritual education in childhood will lead to cultivation of spiritual qualities, prosperity, success, and perseverance. Character rectification and development becomes more difficult after a child reaches adolescence. Character refinement through direct experiences will enable the child to become a spiritual youth and a steadfast adult. Thank you, Member Nation Singapore. You have rightly expressed that maturity is the conscious use of attributes and qualities developed through experience. Spirituality is the greatest of God's gifts, and life everlasting means turning to God. The youth today is misguided and baffled by the excessive choices and is unsure of where to place his trust. Thus, the youth is more vulnerable to the negativity in the society. The onus therefore lies in the hands of the school, even in guiding them and shaping their personality. Anyone who wishes to voice his opinion in this regard may raise his placard. Member Nation Netherlands, you are recognized. Thank you, Speaker, ma'am. UNESCO's 2023 Global Education Monitoring Report emphasizes the need to put learners first by implementing a ban. Almost 1 in 4 countries have banned smartphones in schools due to concerns regarding its impact on students' well-being and distraction from learning. It highlights the benefits, opportunities, and challenges of technology in education, delivering 6 key messages for policymakers and global education community. Online content has grown without enough regulation on quality control. Technology offers an education lifeline for millions. However, it is only possible if several side effects are ignored. We need to teach our children to live both with and without technology. It is to take what they need from the abundance of information and to ignore what is not necessary. We should let technology support, but never let it supplant human interactions in teaching and in learning. CMS representative, you're recognized. Thank you, Speaker ma'am. Conscious of the unprecedented rise in individualism, materialism, violence and self-centeredness in today's society, and of the essential role of educational institutions to help in creating a generation which is compassionate, polite, responsible, and analytic, CMS began to take its endeavors in the field of character education to greater heights by introducing Junior Youth Empowerment Program. The objectives of the program are to enhance the power of expression and engage the junior students in active service to their community. For smooth functioning, the animators of Class 9 meet the junior youth to share their experiences, discuss the challenges faced by them, and suggest solutions. This program not only helps the junior youth to strike a balance between their spiritual and material life, but also enhances their social, emotional, artistic, and moral capabilities. I would like to end my talk with a quote by Swami Vivekananda. All power is within you. You can do anything and everything. I would like to add something.
We at CMS regard man as a mind rich in gems of inestimable value, and education can alone cause it to reveal all its treasures. The slogan, "Each one teach one," is a motivation for the educated class to understand their moral and social responsibility to teach at least one illiterate person, which will make a big difference in society. We at CMS motivate our children to teach one marginalized child or a person from neighborhood so that they are able to develop some basic reading and writing skills, gain confidence while moving about in the society, know the importance of education, and get motivated to seek formal education in school, thereby bringing 100% literacy in the world. Truly said, we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Moving on with the proceedings, the next topic on our agenda is domains of spirituality and their importance in connecting health and well-being. Spirituality is a concept with ancient roots, yet contemporary relevance to health and well-being of an individual. Its assessment in populations of young people, however, remains an immense challenge. Efforts to perform such assessments typically involve use of unidimensional scales incorporating items related to 4 domains, namely self, others, nature, and the transcendent. Member nations, please volunteer to elaborate on the same. Member nation England, you may take the floor. Thank you, Speaker, sir. Spiritual domain is a belief that there is a realm controlled by a divine spirit or a spiritual world that is unseen to mankind. It is directly related to spiritual health, which includes a purposeful life, transcends an actualization of different dimensions and capacities of human beings. It creates a balance between the physical, psychological, and social aspects of human life. Thank you. Thank you, Member Nation England. There are 5 main aspects of personal health: physical, emotional, social, spiritual, and intellectual. In order to be considered well, it is imperative for none of these areas to be neglected. By nurturing and integrating spiritual domains such as interconnectedness, unity, ethics, morality, and personal connections, can provide humans with a sense of comfort, support, and guidance. A person's journey towards spirituality is unique to them. Numerous practices, ideologies, and methods exist for integrating spirituality into one's life. Finding a path that fits a person's values, beliefs, and experiences and promotes their general well-being is what counts the most. With this thought, I adjourn this session of the World Parliament. Our respected founder director, ma'am, is still clapping and you all are awestruck. Thank you so much, ma'am. Thank you for your motivation. You can be louder, come on, parents, louder. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. A very purposeful deliberation indeed by the young parliamentarians. Very well spoken and very well presented. Spiritual education is the need of the hour, and it should be an essential part of the school curriculum as it brings about a holistic development in children. A thoughtful leader who believes that the road to success comes through hard work, willpower, determination, and sacrifice. She is none other than our enigmatic principal, Ma'am Jyotsna Atul. Please welcome ma'am with a thunderous applause. Louder. Thank you so much.
Hello. Thank you so much, Didi. Thank you for this. Parents, you can put your hands together for the generosity of our founders. Thank you so much for all the love you emanate, respected Badi Didi. And before I start delivering my message, I just wanted to say that parents, aren't we a little miser when it comes to clapping for our children? See the lovely message they gave to the World Parliament. So I think they deserve a bigger round of applause. The messages which were just heard, all that you saw on the screen, that is exactly what our founder manager sir's vision is. And I could see the children resonating the same thoughts as our respected sir, he delivers when he addresses all of us. So please put your hands together. I hope you were attentive and you were listening to what your children had to say. No, a bigger round of applause so that the children at the back are able to hear you. Thank you so much. So Jai Jagat and greetings to everyone here. It's a lovely afternoon. I'm so happy to see that the auditorium is full till the end. So thank you very much for being present here today. I very warmly welcome you all to this special occasion when we come together to celebrate the annual Parents' Day and the felicitation of the Board Examination Toppers 2023. I take this opportunity to extend a very warm welcome to our most respected founder manager, sir, Dr. Jagdish Gandhi, a thinker, a spiritualist, a visionary whose humility and generosity has always empowered us. So please put your hands together to welcome our most respected founder manager. Parents, this means you're not listening. I mean, louder round of applause for him. See, he's here on time. He's been so attentive and has been congratulating me for the lovely message the children had to give us. Our most respected founder director, ma'am, Dr. Mrs. Bharti Gandhi, the mother of the school. She looks like a goddess today. I told her she's dressed up in a beautiful sari. Put your hands together for her as well. So respected Didi, your untiring spirit, your steadfastness, it's always supported the vision of our respected founder manager, sir, and you have transformed it into reality. Our respected Managing Director and President, Professor Geeta Gandhi Kingdon in absentia, whose contribution to the school has brought about all the innovation in the pedagogy by exposing us all to the teaching practices across the world. I wholeheartedly thank our respected Superior Principal and Head Q8, that is the Quality Assurance and Innovations Department, Ma'am Sushmita Ghosh, for her motivation and guidance at all times. We very warmly welcome Miss Shweta Vishnoi, the proud mother, Mrs. Shashi Vishnoi, the proud grandmother, Mr. Shivam Vishnoi, the maternal uncle of Miss Tanushri Varshne, who is the board topper of 2023 ICSE examination, and she's attained the All India rank 4 with her hard work and determination. Can we please put our hands together for them once again? We also extend a very warm welcome to her teacher guardian, Mr. Suresh Pratap Singh, because we all know that there's a teacher guardianship scheme which runs in the school, and the teachers take the responsibility. They, with a lot of diligence and hard work, they help steer your children to achieve these positions. So I think, put your hands together for the teachers as well, Mr. Suresh Pratap Singh. Though his parents were also invited, but they couldn't make it as they're out of station. So we very warmly welcome them as well in absentia. Dear parents and grandparents, I would also like to accord a very, very hearty welcome to all of you. Your unparalleled support and cooperation keeps our spirits high throughout our journey. As we all know that City Montessori School has carved a unique recognition and reputation for itself in the world of education, be it academics, co-curricular activities, or sports. It is the only institution which is registered in the Guinness Book of World Records for being the largest private school in a single city. Our motto, Jai Jagat, that is glory to the world, and the ancient traditional value of Vasudhaiva Kutumbakam, or the earth is but one country and mankind its citizens, has inspired one and all. Our founders have been awarded with the 2002 UNESCO Prize for Peace Education, the WUCC Peace Prize of the Philippines in the year 2011, and the prestigious Devi Award, just to name a few. CMS is a school with a difference.
It has been yet another incredible beginning of the session where our students would successfully steer themselves in attaining material, human, and divine education, which aims at excellence in all things, global understanding, universal values, and service to the world. It is not only the numbers that we are proud of, dear parents, but academically, year after year, students of our campuses have attained all India ranks in ICSE and ISC board examinations. The fact, now you need to be attentive to listen to this, the fact that 6,650 students took the board examinations this year across CMS, all the campuses, and 4,042 students of class 10th and 12th have secured 90% and above marks in the 2023 board examinations. It's no mean feat. There were 0 failures, which indeed talks about volumes about our esteemed institution. We are happy to inform you that the All India ranked toppers of the board exams were felicitated by the school with an attractive cash prize of rupees 1 lakh each from the school and an additional rupees 1 lakh from the Honorable Chief Minister, Mr. Yogi Adityanath ji, in a felicitation ceremony. Moving on to the result of RDSO campus, I would like to inform you with pride that Tanushri Varshne scored a whopping 99.20% in the ICSE board exams and bagged the 4th rank at the All India level. 101 students of our campus scored marks between 90 and 99.2% in the board examinations 2023. We hope this standard will not only be maintained, but improved upon as we promote and celebrate excellence through determination and hard work. Now to talk about the co-curricular activities, our students have glorified the campus through participation in co-curricular activities. And dear parents, let me share just the beginning. We started in July, so these achievements which I'm sharing with you are for these months only when we started the new session. So to begin with, Anand of class 12B, who had participated in the Inter-District Open Badminton Tournament from 27th April 23 to 30th April 23 at KD Singh Babu Stadium. He won the bronze medals in under 19 mixed doubles and under 19 boys singles category. You have a job to do. Thank you. In the zonal badminton tournament organized by CISCE, that is CISCE, the council organizes these competitions every year. So at the mini stadium Gomti Nagar, you'll be glad to know that 6 girls from RDSO campus were selected for the regional badminton tournament, namely Gauravi Anushri Mahavar for under 19 girls category, and Aditi Mahavar, Arna Prajapati, Shikruti Kashyap, and Avika Gupta for under 14 girls category. So girls are no less, so we need to put our hands together for them. They're your children after all, and with the result that our campus became the winner for CISCE Zonal Badminton Tournament. For the same tournament, RDSO campus was also the runner-up in the under 19 boys category. We excelled at another sports competition this month when our students won laurels at the CISCE Regional Karate Tournament 2023. This was held at Bluebell School, Jhansi. They won the zonal, they went to the regional level. And they went to Jhansi and this month, and the children were Jayashvi Singh, Mehak Avasthi, Lavjot Kaur, Ranveer Singh, and Shreyash Tripathi. They won gold medals and they did us proud once again. Tripti, Avantika Saini, Akshat Yadav, Ayush Pal, Gauranj, and Kartik Singh Patel brought home silver medals along with the runners-up trophy in under 14 boys category. The efforts are highly praiseworthy. Tanushri once again, the multifaceted girl, she is now in class 11th and she's bagged the first prize in debate competition held in the month of July at the 8th International Interfaith Conference, which was held in WUCC here itself. It was organized by Sharfabad campus and it was not an easy task, dear parents. We were all here and it was a tough competition, so this girl did it again. So she won the first prize, and at the same time, Tejas Tripathi of class 7th. Please put your hands together for this little boy who won the first position in the Expressions Expo Declamation event. So he was dressed up as Charlie Chaplin, and I wish we could, have it for you, but the way he spoke, it was commendable.
Now we come to Shaurya Chilwal and Pranya Agarwal. Pranya you saw in the World Parliament also. These students of class 9 took part in the Frank Anthony Memorial All India Inter-School Debate Competition 2023 in the month of July. See, these are achievements of July. They bagged the trophy of first runners-up team, and Shaurya Chilwal was declared the first runner-up speaker. You have a job to do after we announce the names. I have to remind you. Thank you so much. Now the RDSO cricket team, which participated in the Lucknow Challengers Trophy in a day and night match on the 9th of August 2023, defeated Sainik Public School by 1 run in a thrilling match, thus qualifying for the final round. Dear parents, this was just a glimpse of the few achievements of our students, and we wish all our children the very best for their future endeavors. To talk about the alumni of our campus, we at CMS believe in building and nurturing stronger bonds with our alumni. And our alumni meets, the first alumni meet we had last year, it vouches for the same. Our alumni stand as a mirror for all of us across the globe. They're a testimony to wherever and whatever we do, whatever we did with them, howsoever the teachers trained them in their formative years. So it's really a proud moment for all of us when we meet them after a long gap. So this year also in December, we are planning an alumni meet, and we hope that we have a bigger number assembling this year. Some of our well-established alumni stars from the constellation, you can see the pictures there. Mr. Shikhar Chaudhary, who's now an IPS officer, he's posted in Bihar, very humble boy. Another star of our campus, Mr. Shreyansh Trivedi. Now this is again another great achievement of this boy. He had participated in the Para Athletics World Cup Championship, which was held in Mexico in June 2023. And he is all set to represent our country in the Para Asian Games in October 2023. Parents, he deserves a bigger round of applause. He is from our school, and participating and winning in Para Athletics, again, is not an easy task. So these competitions are going to be held in China, so he'll be participating in October over there. The list continues as I talk about Mohit Kalyani, who has been an extremely laborious student and is now a tax, corporate, and IPR lawyer in Lucknow itself. Miss Venus, you can see the image there. Miss Venus Kumar is yet another brilliant scholar of our campus, and she shines as a judicial magistrate at Gonda. Moving on to the JYEP now, the Junior Youth Empowerment Program. You heard about it in the World Parliament, and I'm sure the children discuss it at home with you all. So this is, again, another program which is embedded in the system, and it focuses on engaging youth as animators. So animators are the ones who are the leaders who are meeting their younger friends, and they're spreading the message which this program wishes to deliver. So together they discuss the moral and spiritual concepts, and at the same time acquire skills for problem solving and decision making. Thus, JYEP is taking deep roots in the campus under the leadership of the teacher coordinator, Ms. Nidhi Sharma. She's doing a fantastic job. Please put your hands together for the team. Together, they're doing a great job at the campus. The young blood trying to shape the world through their little but promising efforts. To talk about our school prayer now, dear parents, I bear witness. Oh my God, you heard the mother sing the prayer. It was a beautifully sung prayer, and the songs also. I think we need to put our hands together for the lovely mothers also once again. The prayer which they sang again is again very close to our heart. I bear witness, O my God, that thou hast created me to know thee and to worship thee. It teaches the students that our sole purpose of our existence is to know God and to worship him. We can know God through the teachings of his manifestations and worship him by obeying his teachings which are written in the holy books. I think we need to reiterate and revise it with our children time and again, and I'm sure all of us are doing that because all we want is virtuous and obedient children. Undoubtedly, the school takes care of the material, human, and divine education. But before the child reaches the school premises, it begins at home with the parents and the grandparents, where the seeds for a strong foundation for moral and social values is laid down. Once the child is at school, the school remains connected with the parents and home through the teacher guardianship scheme, which ensures the formation of an enduring bond
between the teacher and the students. Dear parents, at this juncture, I have a very valid point of concern which needs your attention as well. And again, it was a part of our World Parliament as well, and that is the use of technology. It is high time we all understand that we need to reflect upon the fact that why our children have developed this strong affinity for technology. You will surely agree with me when I say that it was during COVID that technology shaped the world and our children befriended it on the pretext of keeping themselves safe. And unknowingly, they were embracing isolation. It was then the need of the hour, and it took the form of another isolation wherein our children created a new virtual world of their own. However, as a parent, we need to penetrate into their world and remove all the virtual barriers that they have created around them. Dear parents, it's just a lack of communication that creates the lacuna, and it can only be filled with consultation in the family. So it becomes imperative on our part to help our younger generation emerge successful from the fire of the testing times. I would also like to bring to your kind notice that UNESCO, the United Nations Education, Science and Cultural Agency, has well remarked that there is evidence which goes on to show that high levels of screen time has a negative effect on the children's emotional stability and educational performance. Therefore, UNESCO calls for a ban on smartphones in schools across the globe for its overall regulated usage. Dear parents, we need to join hands so as to make our future generations purposeful and directed. A generation that is aware of the sustainable development goals and cares for its environment, as there is no planet B. Before I conclude, I would like to inform you that the academic session 2023-2024 has taken a successful flight wherein our sole endeavor is that no child is left behind. It gives me immense pleasure to apprise you that the recent educational trip to Singapore under the leadership of Mr. Suresh Pratap Singh, the in charge of the senior section, was a successful endeavor wherein our children returned enriched academically and aesthetically. To mention some of the future plans, we have a trip to NASA lined up for the next year where our students will have the most exciting and immersive experiences, I'm sure. And we all know very well that not all the classrooms have 4 walls. So there's so much to learn in our environment. So we are eagerly waiting for this trip to happen somewhere in the maybe early next year or early June, if I can comment on. We are also all set to host our first offline international mega event, Spardha, which is an initiative to join hands with the UN Agenda 2030, that is Sport for Development of Peace. Sorry, Sport for Development and Peace. At this juncture, I would fail in my duties if I do not make a mention of my very dedicated staff, my team. Please put your hands together for them, who has worked with the unmatched enthusiasm, and they have stood by me to equip the students with the power of a resilient mindset, thus creating a difference in the lives of many. We are extremely grateful to our respected management for their unflinching support, which sustains our confidence along with keeping our morals flying high. I finally conclude with the words of Abdul Baha, that children are even as a branch that is fresh and green. They will grow in whatever way you train them. Take the utmost care to give them high ideals and goals so that once they come of age, they will cast their beams like brilliant candles on the world. I convey my best wishes to one and all once again for another year of achievements till we meet again. We wish to soar high, reach out to all across globally for a safer world. May the Almighty keep us safe and secure, for with God, all is possible. Thank you very much. Even I am waiting for you all. Louder. More louder. Thank you, ma'am, for being such a wonderful leader. These words truly are meant for you, that a leader is one who knows the way,
goes the way, and then shows the way. Moving ahead with the program, we now have the lamp lighting, the most auspicious ceremony. I now take the privilege of inviting the guest of honor, Ms. Shweta Vishnoi, the proud mother of Ms. Tanushree Varshney, Ms. Shashi Vishnoi, the proud grandmother, and ma'am, please come. Our respected founders, ma'am, please come. Audience, you have a job to do. Principal ma'am has also reminded you. Aryan from this side, straight. No need from there. Okay. It's a long way to go, no? Most respected founder director ma'am, please come up on the stage. And all our dear mothers, please come up on the stage for the lamp lighting. Please welcome our guest of honor, our most respected founder director, and all our dear mothers on the stage for the lamp lighting. I can see mothers gushing in, making way through the audience, coming up on the stage for the lamp lighting. Lighting the lamp of knowledge and learning. We have our most respected founder manager, sir. What a sight to see all the mothers coming up on the stage for the lamp lighting. May this light spread so far and wide, dispelling the darkness of ignorance. Why to curse darkness? Let's light a lamp of peace, knowledge, and learning. To dispel darkness, we have to come together and unite so as to illumine the world. This, of course, will lead to progress and prosperity. I request all the mothers, after lighting the lamp, to please kindly come up. There are still some mothers sitting in the audience. We request you all to come up to the stage so that we can have a group photograph very quickly without wasting the time. Children are waiting eagerly to present before you all. I would request Mr. Manish to please line them up quickly. Mr. Mehra to walk up. Mr. Sanjeev Mehra to please move up and help the mothers to line them up.
एक बार फिर मैं अनाउंस करना चाहती हूँ आप सबके लिए, जितनी भी मदर्स यहाँ बैठी हैं, कृपया आगे आ जाएं, फोटोग्राफ में ज्वाइन करें। आई थिंक उठ के सिर्फ यहाँ तक आना है। सभी फादर्स को रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी वाइफ्स को बोलें आगे आ जाएं। वी वांट टू हैव अ बिग ग्रुप। Oh, that's lovely. I can see there's a lot of movement at the back. There are some mothers on the stage. सभी से मेरा रिक्वेस्ट है आगे आ जाएं प्लीज। टीचर्स प्लीज हेल्प देम। विनीता मैम, Shamita ma'am, you can please carry on. Come. What a beautiful sight to see the mothers on the stage. Smiling faces and all ready to get themselves clicked. An unforgettable moment which will be cherished forever. A Kodak moment indeed. This photograph, which will be clicked today, will be a part of the CMS saga. Another beautiful moment added to the history of CMS. Huge round of applause for all the mothers. Louder, it can be a thunderous one. Oh God, light my path when it's dark. Strengthen my faith when I falter.
I request everyone to please kindly settle down because the next item is already ready on the stage. Children are already ready to perform. So the sooner you settle down, it would be easier for us to start. I would like to thank everyone for joining the lamp lighting ceremony. Our most respected founder manager believes that the school is a lighthouse of the society, which provides meaningful and spiritual education to the students, parents, and society. Give light and the darkness will disappear itself. If you are light, you cast away the darkness. A candle loses nothing when it lights another candle. As we work to create light for others, we naturally light our own way. Thank you all for creating a pious and radiant atmosphere. Blessed is the person who understands that the reason for praying is not to have all he wants, but to thank God for all he has given. CMS follows the philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam. The earth is but one country and mankind its citizens. We now have the all religions prayer, which signifies the worship of the Almighty and that different religions are paths to reach one and the same God. चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन मंगलहारी निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवन
ये जमीन जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, हो राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, ओ तब ना था कुछ यहाँ, ओ तब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, ला शरीका लहू, ला शरीका लहू, मालिकुल मुल्क तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ऊंची अपार बेअंत स्वामी, ऊंची अपार बेअंत स्वामी, ऊंची अपार बेअंत स्वामी, ऊंची अपार बेअंत स्वामी, कौन तेरे गुण तेरे, उच्चा दरबाबे नानक दा, उच्चा दरबाबे नानक दा, उच्चा दरबाबे नानक दा, जी मैं सोभा सुन के आया उच्चा दरबाबे नानक दा, उच्चा दरबाबे नानक दा, बोलो सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी, सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी, सतनाम 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 वाहिगुरु 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 जी। Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Once I was blind, I could not see the glory of Jesus, so rich and free. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. I found my Lord. मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है, मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध
न जाने भेष न जाने देश न बुद्धि की शुद्ध है। मन के अंधों को दिया के, मन के अंधों को दिया के, सुनाई बहरों को दो बातें, सदियों के गूंगे गाने लगे, गाने लगे। ये बुद्ध की सेवा प्रसिद्ध है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है। वो शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है तन बुद्ध है। वो शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है तन बुद्ध है। तेरा नाम ही मेरा आरोग्य है, तेरा स्मरण ही मेरी औषधि। हे मेरे ईश्वर, हे परमेश्वर, तेरा स्मरण मेरी शक्ति। तेरा नाम ही मेरा आरोग्य है, तेरा स्मरण ही मेरी औषधि। तेरी दया प्रभु इस लोक में भी, तेरी दया प्रभु परलोक में भी। तू है सर्वज्ञ, तू ही समर्थ, देने वाला भी तू है। तेरा नाम ही मेरा आरोग्य है, तेरा स्मरण ही मेरी औषधि। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु, चाहे कहो श्री राम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु, चाहे कहो श्री राम। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु, चाहे कहो श्री राम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु, चाहे कहो श्री राम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम।
सबका एक है, अलग अलग है नाम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। Indeed, a divine performance, a perfect way to portray that God is one, religion is one, and mankind is one. Let us all cherish the dream and desire of our respected founders who have left no stone unturned in preparing future world citizens who believe in global citizenship, sanctity of hearts, and character building, thereby making our students resilient and spiritual. Education is a continuous and creative process. It aims to develop the capacities latent in human nature and to coordinate their expression for the enrichment and progress of society. By equipping the children with material, human, and divine knowledge, education to release truth. Within this creative process, it is possible to achieve an essential harmony between faith and reason through an approach to education that encourages the free investigation of all reality and trains the mind to recognize the truth, irrespective of its origin. True education releases capacities, develops analytical abilities, confidence in oneself, willpower, and goal-setting competencies, and instance the version that will enable a person to become a self-motivated agent of social change, serving the best interests of the community. Today, education needs an expanded definition that frees it from today's largely economic context and acknowledges its role in transforming both individual lives and entire society. Objectives education in terms of knowledge, qualities, skills, attitudes, and capacities that enable individuals to become conscious subjects of their growth and active responsible participants in a systematic process of building a new world order. Educated persons should understand their positions as members of both a local community and the world community, and they must believe that their lives can make a difference. Education makes the child a collaborator both in his own growth and in the development of his community. A well-educated community member is a determined yet humble participant who helps overcome conflict and division, thereby contributing to a spirit of unity and collaboration. Although economic considerations are recognized as necessary in educational planning, resistance is growing against the conventional view that education is chiefly a means for only improving the individual's own economic situation. An educational approach directed towards personal growth and social transformation. Continue. I dream a world of peace, happiness, and kindness, where people know that the value of love is priceless, where each and everyone can get their needs and have belief in their deeds. A world where there is no difference between the rich and the poor, life being pleasant for living evermore. If we want to attain world unity and peace, it becomes extremely crucial to inculcate global competencies in the 21st century education system so that the children is equipped with material, human, and divine education. Ladies and gentlemen, we bring before you a message of peace and unity, a signature item, the World Unity Prayer Ceremony, an initiative by our most respected founder manager, sir, to spread the message of peace and unity all over the world.
would it be? He said no promises, you know, 'cause he could get caught in heavy snow. And when I answered, he just stared and smiled at me. I want peace, peace, love, and harmony, and for the world to get along like a family. I want peace, peace, love, and harmony, and if Santa brings me that, I'll have it all. I'm scared by what I see on TV, and there are days the thought of war is on my mind. Out of all the things I've ever asked him for, this one's the one I really pray he'll find. I want peace, peace, love, and harmony, and for the world to get along like a family. I want peace, peace, love, and harmony, and if Santa brings me that, I'll have it all. And if Santa brings me that, I'll have it all. God is the Father of all. Mankind are His children. This globe is one home. Nations, the members of one family. The mothers in their homes and the teachers in the schools must teach these ideals to the young from the cradle up to the age of manhood. I am the world citizen. I stand for one world undivided. I pray for the safety of all who dwell in our land, to bless our land with peace and unity, for bountiful harvest and productive labor, to defend us from every danger and guard us from all the evil throughout. The unity of your family should take priority over any other consideration. If love and agreement are manifested in a single family, that family will advance, become illuminated and spiritual. What incalculable benefits and blessings would descend upon that great human family, where unity and brotherhood were established. I pray for the happiness and well-being of all the people of North America. May unity prevail in North America. May unity prevail on earth.
family must consult in all matters, whether major or minor. Consultation gives insight into things and enables the family members to delve into questions which are unknown. No welfare and no well-being can be attained except through consultation. The light of truth shines from the faces who engage in consultation. I pray for the happiness and well-being of all the people of South America. May unity prevail in South America. May unity prevail on earth. Show honor to your parents and pay homage to them. This will cause blessings to descend upon you from the bounty of the Lord. After the recognition of the oneness of the Lord, the most important of all duties is to have due regards for the rights of one's parent. Family must consult each other in all matters, as it will serve as the lamp of guidance to lead the way in the darkness and will be the best star of understanding. I pray for the happiness and well-being of all the people of Europe. May unity prevail in Europe. May unity prevail on earth. Through family consultation, women and girls must be educated both spiritually and intellectually. A fundamental component of such an enterprise is the imperative need to educate women into full partnership with men, providing them with a range of opportunities to express their newfound competencies that do not undermine their unique role as mothers, the artisans of character and builders of civilization. I pray for the happiness and well-being of all the people of Africa. May unity prevail in Africa. May unity prevail on earth. Love and fellowship are the foundation of family consultation. The goal of loving consultation is to arrive at a unanimous decision. Let none in the whole society go in need. Befriend one another until all become a single body, one and all. I pray for the happiness and well-being of all the people of Oceania. May unity prevail in Oceania. May unity prevail on earth.
Let the children of our times make the greatest progress in the shortest span of time. Let them open wide their eyes and uncover the inner realities of all things. Become proficient in every art and skill and learn to comprehend the secrets of all things even as they are. Let us make every effort in order that these children are rightly trained and educated, and that each one of them may attain perfection in the world of humanity. I pray for the happiness and well-being of all the people of Asia. May unity prevail in Asia. May unity prevail on earth. Let us bear in mind the keynote of the cause of God is not dictatorial authority, but humble fellowship. Not arbitrary power, but the spirit of frank and loving consultation. Nothing short of a spirit of a true consultation can hope to reconcile the principles of mercy and justice, of freedom and submission, of the sanctity of the right of the individual and self-surrender, of vigilance, tolerance, and prudence on one hand, and courage, candor, and fellowship on the other hand. Loving consultation in a prayerful atmosphere is the only way to solve family problems. Let's remind ourselves that we are flowers of one garden and fruits of one tree. So let's join hands in making the future generations stronger, resilient, encompassing the human values, all well equipped to achieve the Sustainable Development Goals. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. Let there be unity on earth. Let there be unity.
full of life and unity. May our people live together for the noble cause of peace. Let there be unity, honor. Let there be unity, honor. Let there be unity, honor, forever and ever to be. Now come, let's forget our strife, brush guns and swords aside. Embrace all men as brothers, for there's the spice of life. Let there be unity, honor. Let there be unity, honor. Let there be unity, honor, forever and ever to be. Forever and ever to be. Forever and ever to be. Let's put our hands together for such a wonderful performance. If such innocent hearts will pray for peace, then God will surely answer their prayers. Let there be unity forever. Let us all join hands together. Let all live happily forever. May peace prevail on earth. I would like to share a small anecdote named Footprints on the Sand. One night, a man had a dream. He dreamt that he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed the scenes from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand, one belonging to him and the other to the Lord. When the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times along the path of his life, there were only one set of footprints. He also noticed that this happened at the lowest and saddest times of his life. This really bothered him, and he questioned the Lord about it. Lord, you said that once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is only one set of footprints. I don't understand why, when only I needed you the most, you would leave me. The Lord replied, "My son, my precious child, I love you and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was then that I didn't follow you, I carried you." The great poet Mark Twain had so very aptly described the uniqueness of India. I quote, "India is a cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. At CMS, there is a culture that any function is incomplete without state dances. The feeling is beyond words when you come to know more about your country.
presenting before you a choreography showcasing the vibrant hues of India, a land that exemplifies unity in diversity. Before the event gets ready, I'd like to share a strong poem with you. The relationship between man and God cannot be put into words. People are often unreasonable, irrational, and often self-centered. Forgive them anyways. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyways. If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies. Succeed anyways. If you are honest and sincere, people may deceive you. Be honest and sincere anyway. What you spend years creating, others could destroy overnight. Create anyway. If you find serenity and happiness, some may be jealous. Be happy anyway. The good you do today will often be forgotten. Do good anyway. Give the best you have, and it may never be enough. Give your best anyway. In the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Now, get ready to experience the beauty of our motherland by witnessing the dance films from Rajasthan, the land of kings, and Punjab, the land of 5 rivers. केसरिया बाल में पधारो हरे तुम्हारे देश रो मैं काहे करूं बखान धरती सुनहरी लहरियों केसरियों आसमान धरती सुनहरी लहरियों केसरियों आसमान
सोनिए हाँ परे हो जा सोनिए परे हो जा सोनिए साथी रेल गड्डी I couldn't hear you, actually. Thank you. Absolutely true, the children have proven something very, very true. Dance is the hidden language of the soul. And when this language combines with the beauty of Indian dances, a magic is created. I feel extremely blessed and honored to invite our most respected founder manager, sir, whose visionary ideals and unending support and guidance have always enlightened us. The zeal with which he addresses us and imparts so much of knowledge, even at this age, is commendable, sir. We need to learn a lot from you, sir. From your vision and passion, we derive a lot of inspiration and goal-oriented values. So let's welcome our most respected founder manager, sir, a person who is a one-man army, the backbone and the strong pillar of City Montessori School, with a huge round of applause. परमादरणीय प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योत्सना अतुल दीदी जी, परमादरणीय सभी टीचर्स, आरडीएसओ शाखा के परमादरणीय अभिभावकगण, श्रद्धेय माताएं बहनें, दादा दादी और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं यहाँ की प्रिंसिपल
और टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अभी ये केवल 20 अगस्त है और ये नया सेशन 1 जुलाई को शुरू हुआ और इतना सुंदर वार्षिकोत्सव 1 महीने 20 दिन के अंदर हो जाना, ये एक अपने आप में आश्चर्य है। यहाँ के एक बच्चे ने पूरे इंडिया में 4थी पोजीशन पाई है। लाखों लाखों बच्चों के बीच में से एक बच्चा RDSO का 4था पोजीशन पर आना बहुत बड़ी बात है। और प्रिंसिपल ने उस बच्चे को 1 लाख रुपए का इनाम दिया है, जो कि आज यहाँ एक उनकी मदर को फलों में तोल के सम्मानित किया जाएगा और वो आज हमारी चीफ गेस्ट भी हैं। इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट उनकी मदर को बनाया गया है। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुए वो उद्देश्यपूर्ण थे और बहुत ही अच्छी एक उद्देश्यपूर्ण थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको प्रस्तुत किया गया। जैसे वर्ल्ड की पार्लियामेंट ऑन स्पिरिचुअल एजुकेशन, मनुष्य की 3 रियलिटीज हैं। Man is the material being, man is the human being, man is the divine being. मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। तो एक मनुष्य आध्यात्मिक प्राणी है, तो इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और जो वर्ल्ड पार्लियामेंट उन्होंने करी वो स्पिरिचुअल एजुकेशन या आध्यात्मिक शिक्षा पर करी। मनुष्य के जीवन में केवल भौतिक ही नहीं है, मनुष्य का जीवन एक मानवीय, एक मानव समाज का सदस्य है। बालक परिवार में दादा हैं, दादी हैं, माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं। तो बच्चे को परिवार में एक इस प्रकार से उसे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो दादा दादी के चरण स्पर्श करे, माता पिता के चरण स्पर्श करे, उनका आशीर्वाद ले, बड़े भाई बहन का आदर करे और जो छोटे हैं उनको प्यार करे और घर में इस तरह रहे कि मम्मी पापा के आँख का तारा बने। बेटी हो तो आँख के तारा बने, बेटा हो तो आँख का तारा बने, सबका दुलारा, सबका प्यारा बच्चा बने वो। और बच्चे के अंदर यदि ये गुण बाल्यावस्था में आ गए तो जब वो बड़ा होकर समाज में प्रवेश करेगा तो समाज में भी आदर का पात्र बन जाएगा, समाज में भी लोग उसे सम्मान करेंगे। तो बाल्यावस्था की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह भी बताया गया कि स्मार्टफोन बच्चों को नहीं देने चाहिए। इसके लिए यूनेस्को ने सारे दुनिया के स्कूलों से स्मार्टफोन को बैन किया है ताकि बच्चे अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। कोरोना पीरियड में ये एनकरेज किया गया था ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें और टाइम वेस्ट न हो, उनका साल जाया न जाए। तो उनकी पढ़ाई का एक ही तरीका था कि स्मार्टफोन या कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट, इनके द्वारा वो पढ़ाई कर सके। तो उस समय स्मार्टफोन को दिया गया। लेकिन अब कोरोना ख़त्म हो गया है और स्मार्टफोन पर बच्चे लगे रहें, अपना टाइम वेस्ट करें और अपनी पढ़ाई लिखाई को ध्यान न दें तो वो ठीक नहीं है। इसलिए स्मार्टफोन को पूरे यूनाइटेड नेशन में, पूरे वर्ल्ड से बंद कर दिया गया है। और आप भी अपने बच्चों को कृपा करके स्मार्टफोन
न दीजिए। तो ये भी आज यहाँ बताया गया। यहाँ पर जो सर्वधर्म प्रार्थना हुई बहुत उच्च कोटि की थी। सभी धर्म का स्रोत एक परमात्मा है। जो प्रेयर डांस किया गया वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहो श्री राम, सबका मालिक एक है, अलग अलग है नाम। तो उसके नाम तो अनेकों हैं। इस संसार में 200 से ऊपर देश हैं और हर एक देश की भाषा फर्क है। आप पानी के गिलास को ही ले लें तो पानी को वाटर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, और हर भाषा में उसका एक अलग नाम है। इसी तरह परमात्मा के अनेक नाम हैं। जितनी भाषाएं उतने उसके नाम हैं, लेकिन वो एक है। परमात्मा एक है और परमात्मा की ओर से दिव्य पुस्तकें और दिव्य संदेश वाहक एक ही परमात्मा की ओर से आए हैं। एक ही परमात्मा ने भेजा है। युग युग की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। तो आज यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना करी गई और ये बताया गया कि ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है। प्रार्थना हम कहीं भी करें, मंदिर में करें, मस्जिद में करें, गिरजे में करें, गुरुद्वारे में करें, उसको सुनने वाला ईश्वर एक है। ऐसा नहीं कि मस्जिद में प्रार्थना करें तो कोई और अल्लाह सुनेगा और मंदिर में करें तो कोई और ईश्वर सुनेगा। ईश्वर अल्लाह तो एक ही बात है। चाहे ईश्वर कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे रब कहें, चाहे उसे गॉड कहें, चाहे वाहे गुरु कहें, चाहे उसे परमात्मा कहें, जो भी ईश्वर कहें, जो भी कहें, हर भाषा में एक नाम है। और जितनी किताबें हैं ये भी सब एक परमात्मा की ओर से आई हैं। क्योंकि परमात्मा 2 या 3 या 4 या 5 या आधी दर्जन, 1 दर्जन परमात्मा नहीं है। सारी किताबें एक ही परमात्मा से युग युग में आई हैं। गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म के प्रति ग्लानिर्भवति भारते, मानव के जीवन में ग्लानि उत्पन्न हो जाए, अर्थात न प्रभु की आज्ञाओं को जानने की इच्छा हो और न उन पर चलने की, और रिचुअल करने लगे, कर्म कांड करे, गंगा में डुबकी लगाए, तिलक लगा ले और पता नहीं क्या क्या रिचुअल्स करते हैं लोग। हर धर्म में रिचुअल्स आ गए। ईश्वर की आज्ञाओं को जानना और उन पर चलना, ये धर्म है। धर्म माने कर्तव्य। मनुष्य का कर्तव्य अपने रचनाकार को, परमात्मा को जाने, अर्थात उसकी शिक्षाओं को जाने और उन शिक्षाओं पर चले। ये पूजा है। तो न मनुष्य पूजा करता है और न वो ईश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहता है। इसे कहते हैं धर्म की हानि। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, तब मानव के मन में धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए, धर्म की ज्योति को जगाने के लिए, कर्तव्य का बोध कराने के लिए कि मनुष्य अपने रचनाकार की शिक्षाओं को, अपने क्रिएटर की, अपनी बनाने वाले सृजनहार की शिक्षाओं को जानने और उन पर चलने की शिक्षा देता है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम, तब मैं बार बार अपने आप को सृजित करता हूँ विविध रूपों में।
रामायण में भी लिखा है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि होगी तो तीन तरह के लोग बढ़ जाएंगे समाज में। बाढ़ हैं असुर, जो देवताओं की राह पर नहीं चलते, अधम, जो धर्म की राह पर नहीं चलते, अभिमानी, जो ईश्वर के सामने घमंड जताते हैं कि ले आओ तुम्हारा ईश्वर क्या मदद करेगा। जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है तो कहते हैं तुलसीदास जी रामायण में कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ हैं असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो विविध रूप में आएंगे, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी ईसा के रूप में, कभी मोहम्मद के रूप में, कभी नानक के रूप में, कभी बाब और बाहुल्ला के रूप में, कभी जोरास्टर, मोजिस, अब्राहम और भगवान महावीर के रूप में, और भी अवतार आए तो विविध रूपों में आएंगे। लेकिन हर धर्म का एक उद्देश्य है। द बेसिक पर्पस of all the religion is to safeguard the interest and promote the unity of the human race. हर धर्म का एक ही उद्देश्य है। The basic purpose of all the religion, the basic purpose of all the religion is to safeguard the interest, मानव हितों की रक्षा करना, safeguard the interest, human interest. The basic purpose of all the religion is to safeguard the interest and promote the unity of the human race. हर धर्म का एक उद्देश्य है मानव मात्र की एकता पैदा करना, promote the unity of the human race and to foster the spirit of love and fellowship amongst men. मानव मात्र में प्रेम, आपसी प्रेम बढ़े और सद्भावना बढ़े और मित्रता बढ़े। हर धर्म का एक ही उद्देश्य है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म ले लीजिए, बुद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म का एक ही उद्देश्य है। आज से 7,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम आए और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मानव जीवन को मर्यादित करने की शिक्षा दी कि मानव जीवन मर्यादित हो, मानव जीवन में अमर्यादा न हो, हमारा जीवन राइशियस हो, पवित्र हो और मर्यादित हो, अमर्यादित न हो। 7,500 वर्ष पूर्व राम आए, उनकी मृत्यु के 2,500 वर्ष के बाद यानी आज से 5,000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। कृष्ण को दिव्य लोक से गीता का ज्ञान मिला, उसमें हजारों शिक्षाएं, लेकिन मुख्य शिक्षा है न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय के वास्ते, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, even if you have to punish your brother, punish him. Even if you have to punish your family members, punish them. But justice must be upheld. न्याय तो हर हालत में होना ही चाहिए, क्योंकि न्याय नहीं होगा तो अन्याय हो जाएगा और अन्याय होगा तो अव्यवस्था हो जाएगी। चाहे परिवार हो, चाहे हमारा विद्यालय हो, चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो, या शासन व्यवस्था हो, या समाज हो, कहीं भी यदि न्याय नहीं होगा तो अन्याय हो जाएगा और अन्याय होगा तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो न्याय की शिक्षा उन्होंने दी। कृष्ण की मृत्यु के 2,500 वर्ष के बाद भगवान बुद्ध का आगमन होता है। बुद्ध जी ने सम्यक ज्ञान दिया, सब बराबर है, ऊंच नीच गलत है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये व्यवस्था
उन्होंने कहा कि ये मनुष्यों की बनाई है, परमात्मा ने नहीं बनाई। परमात्मा ने बनाई होती तो गीता में, कुरान में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में, किताब एकदस में, किताब एजाविस्ता में, त्रिपिटक में, किसी भी पवित्र पुस्तक में जो रिवील्ड बुक्स हैं उसमें इसका जिक्र होता। किसी भी परमात्मा की किताब में जाति पाति नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था मनुष्यों की बनाई है, इसको विश्वास नहीं करना चाहिए। कहीं भी ऊंच नीच की भावना अपने बच्चों में ना आवे, तो ये भावना बच्चों में डालनी चाहिए कि ये सब बराबर है। और बुद्ध की मृत्यु के 500 वर्ष के बाद, यानी आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ। उन्हें कीलों से ठोक दिया गया और मार दिया गया जीते जी। और जब लोग मार रहे थे तो वो प्रार्थना कर रहे थे, हे परमात्मा तू इन्हें माफ कर दे, क्योंकि तो अबोध और अज्ञानी है, ये अपराधी नहीं है। इनके माता पिता ने और इनके टीचर्स ने इन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं कराया, इन्हें ईश्वर का बोध ही नहीं कराया, इन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये अज्ञानता अवश्य काम कर रहे हैं। तो ये अपराधी नहीं, इतनी करुणा और दया थी उनके मन में, उनके लिए भी जो उन्हें मार रहे थे। और उनकी मृत्यु के, ईसा की मृत्यु के 600 वर्ष के बाद, यानी आज से 1400 वर्ष पूर्व, 1400 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद साहब का आगमन इस धरती पर होता है, मक्का में, अरेबिया में। बारबरस जंगली ट्राइब्स ऑफ अरेबिया उन्हें मारना चाहती थी। 13 वर्षों तक मोहम्मद साहब मौत के साए में जिए। ये बारबरस जंगली ट्राइब्स ये गरीबों की बहू बेटियों को ले जाए, उनके बच्चों को ले जाए, उनके पशुओं को ले जाए, उनके साथ बदसलूकी करते थे, उनके साथ जुल्म करते थे। तो मोहम्मद साहब उन्हें बचाते थे। तो ये लोग कहते थे मोहम्मद से, तुमने क्या कोई ठेका लिया है इन गरीबों को बचाने का? तुम कौन होते हो, हम तुम्हें मारेंगे। एक एक दिन मोहम्मद साहब का मुश्किलों में जिया और 13 वर्षों तक मोहम्मद साहब ने तकलीफ़ें उठाई। और 13 वर्ष के बाद वो मक्का से एक दिन डेड ऑफ द नाइट में, रात के अंधेरे में, वो मक्के से मदीने गए। उस दिन मक्का में लोगों ने तय किया था कि आज मोहम्मद को हमें मार देना है। तो जब मोहम्मद कहीं दिखाई नहीं पड़े तो चारों तरफ लोग गए उनकी तलाश में। एक बहुत बड़ा दल मदीने की तरफ गया। मोहम्मद साहब के साथ जो लोग थे उन्होंने देखा कि पीछे से बहुत बड़ा दल कातिलों का आ रहा है, नंगी नंगी तलवारें लेकर मारने के लिए। तो वो अबीसीनिया भाग गए। इन लोगों ने अबीसीनिया तक पीछा किया। मोहम्मद साहब को बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई। मोहम्मद साहब को कुरान शरीफ खुदा की तरफ से मिली। उसकी जो पहली शिक्षा है वो ये है कि खुदा रब्बुल आलमीन है। रब माने परमात्मा, अल्लाह या रब या ईश्वर या गॉड, जो भी कहें, रब कहें तो रब्बा भी कहते हैं और रब्बुल प्यार से कहते हैं रब को। और रब्बुल आलमीन माने ये धरती, सृष्टि, ये ग्लोब। तो आलमीन का रब है वो, सृष्टि को बनाने वाला है। जब सूरज, चांद, धरती और आकाश कुछ भी नहीं था तब भी खुदा था, तब भी परमात्मा था, तब भी अल्लाह था, तब भी गॉड था।
और आज भी है, उसके नाम अनेक हैं। तो वो जो परमात्मा है, ये आलमीन का रब है, इस सृष्टि को बनाने वाला, एक खुदा के बंदे हैं, एक अल्लाह ने सबको बनाया, एक परमात्मा ने सबको बनाया, सब भाई भाई हैं। तो कुरान शरीफ का संदेश भी भाईचारे का। मोहम्मद साहब की मृत्यु के 900 बरस के बाद, यानी आज से 500 वर्ष पूर्व, गुरु नानक देव जी का जन्म होता है। और नानक जी ने के पिताजी ने जब छोटे से थे तो 20 रुपए दिए कि जाओ कुछ व्यापार करो और आमदनी घर में आएगी, सौदा लेके आओ, घर में रखो और बेचा करो, कुछ आमदनी आ जाएगी। तो व्यापार करने के लिए, सौदा लेने के लिए गए। रास्ते में उन्हें लोग मिले जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तो उन्होंने पूछा नानक जी ने, तुम क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने कहा कि हम भूखे हैं, 15-15, 20-20 दिन से हमें खाना नहीं मिला, हमारे पास पैसे नहीं है। तो नानक जी ने 20 रुपए का आटा, चावल, दाल खरीदा, नमकवाद खरीदा और लंगर बना दिया, खाना, और सबको खिला दिया। लौट के आए तो पिताजी ने पूछा, बेटे तुम नानक तुम सौदा ले आए? हाँ पिताजी, मैं सौदा ले आया हूँ। तब पिताजी ने पूछा, क्या लाए हो? तो उन्होंने कहा, पिताजी आज मैं सच्चा सौदा लाया हूँ। तब पिताजी ने पूछा, ये क्या होता है? पिताजी वो रो रहे थे, तड़प रहे थे। तो मैंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने कहा कि हम 15-15, 20-20 दिन से भूखे हैं, हमें खाना नहीं मिला, हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने 20 रुपए की आटा, दाल, चावल खरीद के, नमक लेके उन्हें लंगर बना के खिला दिया। और जानते हो मैं उन्होंने क्या दिया? क्या दिया? उन्होंने दुआएं दी। कहा कि नानक तुम्हें धरती के बहुत बड़े इंसान बनोगे, सारी दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। पिताजी आप कहते हैं ना कि गरीब दुआएं दे दे तो परमात्मा उसे पूरी करता है, क्या इनकी दुआओं को परमात्मा पूरी करेगा? तो नानक जी के पिताजी ने कहा, अवश्य, परमात्मा सच्ची दुआएं कोई करे तो उनको पूरा करता है, इनकी दुआएं पूरी होंगी। और बेटे तुम मेरे घर में संत ही नहीं, एक अवतार पैदा हुए हो। अब वो सचमुच अवतार बने। उन्होंने कहा, अब्बल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, और एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये सारा जग एक परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, किसी को भला बुरा मत करो। और नानक नाम चढ़ती कला, कब? जब तेरे भाने सर्वत्र दाबला। नानक का नाम तो ये ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग है, लेकिन कब? जब तेरे भाने सर्वत्र दाबला, सारी सृष्टि की भलाई की भावना होगी तब। नानक की मृत्यु के 300 वर्ष के बाद, यानी आज से 200 वर्ष पूर्व, बाहुल्लाह का जन्म हुआ। बाहुल्लाह का जन्म ईरान देश में हुआ। उनकी घोषणा करने के लिए महात्मा बाब आए। महात्मा बाब को 18 लेटर्स ऑफ लिविंग ने पहचाना। संसार के विभिन्न देशों के 18 लोगों ने पहचाना कि बाब यीशु के अवतार है। हमारे साईं दे हिंद, साईं बाबा जो पूना में हैं, साईं आश्रम है जिनका पूना में, तो वो यहाँ से गए बाप से मिलने के लिए, और बाप से मिलकर लौट के आए। तो हिंदुस्तान से भी एक गए थे। तो बाप ने घोषणा की कि मेरे बाद
एक बहुत बड़े अवतार आएंगे, बाहुल्ला, जो इस दुनिया को बदल देंगे। उन्हें ईश्वर का संदेश मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो नई दुनिया का नया रास्ता दिखाएंगे। बाप को 750 गोलियों से वहाँ के बादशाह नसीरुद्दीन शाह ने तरबीज के चौराहे पर खड़ा करके ईरान देश में, जो तेहरान उनकी राजधानी है, उसके तरबीज के चौराहे पर खड़ा करके 750 सैनिकों को बुलाया, बंदूकधारी, और उन्होंने बंदूक चलाई और सबको 750 गोलियों से भून दिया गया। 20,000 उनके अनुयायियों को कत्लेआम कर दिया गया। बाहुल्लाह को 40 वर्षों तक, जब बाहुल्लाह आए तो 40 वर्षों तक जेल में रखा गया। 4 देशों में देश निकाला हुआ। उन्हें डंजन में डाला गया, एक गड्ढे में, जहाँ पर झींगुर, मच्छर, छिपकली, सर्प और बेतहाशा बदबू थी, उसमें रखा गया। वहीं उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तब वो कहते हैं, हे प्राणी, मेरा प्रथम परामर्श ये है कि तू एक शुद्ध, दयालु और ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हृदय धारण कर, ताकि पृथ्वी का अनंत साम्राज्य तेरा हो। My first counsel is this: possess a pure, kindly and a radiant heart, that thine may be a sovereignty, ancient, imperishable and everlasting. दूसरी बात उन्होंने कही, एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभो। O my God, unite the hearts of thy servants and reveal to them the great purpose. पति और पत्नी, पिता और पुत्र, दादा और दादी, भाई और बहन, सबके हृदय परिवार में पवित्र हो जाएं और एक हो जाएं, तो घर में स्वर्ग आ जाएगा। घर घर में स्वर्ग आएगा। और गांव में या मोहल्ले में या नगर में या प्रांत में, देश में, दुनिया में सबके हृदय पवित्र होकर एक हो जाएं, तो सारी दुनिया में स्वर्ग आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हृदय एक हो। यूँ तो होली में और ईद में हम लोग गले मिलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उन्होंने कहा, भाई गले मिलने से काम नहीं चलेगा, अब समय आ गया है हृदय मिलाने का, क्योंकि आज की जो समस्या है वो हृदय मिलने की है। मानव को सुख केवल हृदय मिलने से ही मिलेगा। परिवारों में दूरियां बढ़ रही हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, फैमिली फ्यूड्स बढ़ते जा रहे हैं, पति पत्नी में तनाव बढ़ रहा है, तो ये भाई भाई में तनाव बढ़ रहा है। ये सब का एक ही उपाय है, हृदय पवित्र हो और एक हो जाए। और आप देखें कि देशों के बीच युद्ध हो रहे हैं। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध बहुत तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। आप देखें इजराइल और पैलेस्टाइन में रोज युद्ध हो रहे हैं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में टेंशन है। आप देखें तो चाइना और ताइवान में टेंशन है। इंडिया और पाकिस्तान की 3 लड़ाई हो चुकी हैं, और चाइना के साथ भी इंडिया के संबंध बहुत अच्छे नहीं। तो दुनिया में बहुत बुरी हालत होती चली जा रही है। द फ्यूचर ऑफ ओवर 2.5 billion children of the world and the generations yet to be born has become progressively more insecure and unprotected during past 7 decades since the bombing of Hiroshima and Nagasaki and the recent spread of international terrorism, global warming, environmental degradation, stockpiling of arms and ammunition of mass destruction,
fear of a third world war and a nuclear holocaust. आज स्थिति ये है कि कभी भी न्यूक्लियर वार छिड़ सकती है और न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट हो सकता है, और इसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनका 2.5 अरब बच्चे हैं, 7.5 अरब आबादी है इस दुनिया की, उसमें से 1/3 यूएनएस को मानता है कि 1/3 बच्चे हैं, तो 2.5 अरब बच्चे हैं। उनका भविष्य दिन प्रतिदिन अंधकार में होता जा रहा है, और आगे आने वाली पीढ़ियाँ, the generation yet to be born has become progressively more insecure and unprotected during past 7 decades. तो ये जो पिछले 7 शताब्दियों में ये एक ये जो विनाश की लीला सारे दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, इससे हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। इसलिए अब बाहुल्ला ने आके एक और चीज़ कही कि वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट हो, वर्ल्ड की गवर्नमेंट हो, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, वर्ल्ड की एक करेंसी, वेट्स और मेजर एक हो, वर्ल्ड की एक व्यवस्था हो पॉलिटिकल और एक व्यवस्था हो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑर्डर वर्ल्ड का एक हो और इकोनॉमिक ऑर्डर भी एक हो, एक तराजू बाट हो, एक सिक्का हो सारे दुनिया में, और एक धर्म हो, और सारी दुनिया का धर्म तो एक ही है, जो हमारी स्कूल की प्रार्थना में कहते हैं, आई वियर विटनेस माई गॉड, मैं साक्षी देता हूँ हे मेरे परमेश्वर कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। प्रभु को जानने के मानी क्या है? प्रभु की आज्ञाओं को जानना। प्रभु की आज्ञाएं कहाँ से आती हैं? परमात्मा की आज्ञाएं कहाँ से आती हैं? परमात्मा से। किसके माध्यम से? उनके संदेश वाहकों के माध्यम से, मैसेंजर्स ऑफ गॉड, जो मैसेजेस लेके आते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, नानक, बाब, बाहुल्ला, जोरास्टर, मोजिस, अब्राहम, भगवान महावीर, जो जो परमात्मा के दिव्य संदेश वाहक हैं, एक ही परमात्मा से संदेश चलाते हैं। तो ये युग युग में आते हैं, और जिस युग की आवश्यकता जैसी होती है वैसे नियम देते हैं। जब मर्यादा की कमी हुई तो उन्होंने मानव जीवन को मर्यादित करने की परमात्मा ने राम को भेजा इस धरती पर कि जाओ मानव जीवन को मर्यादित करो। जब न्याय की कमी हुई तो परमात्मा ने कृष्ण को भेजा कि जाओ इस समाज में न्याय की स्थापना करो। और जब जाति पाति बढ़ने लगी तो परमात्मा ने बुद्ध को भेजा कि जाओ लोगों को बताओ कि जाति पाति में विश्वास ना करें। जाति तो एक है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। ये शरीर चाहे जाटव का हो, हरिजन का हो, या ब्राह्मण का हो, या क्षत्रिय का हो, या वैश्य का हो, 5 चीज़ों से बनता है। क्षित माने मिट्टी, जल माने पानी, क्षित जल, पावक माने अग्नि, क्षित जल पावक, गगन, इसमें गगन तत्व है, और समीर वायु तत्व है। तो इन 5 चीज़ों से शरीर बना है, चाहे हरिजन का हो चाहे जाटव का हो। जैसे 5 चीज़ों से सुराही बनती है, सकोरे बनते हैं, गमले बनते हैं, कुम्हार बनाता है। तो क्या ये जो सकोरे बनते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हैं? तो ये प्राणी कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे ऊंचे नीचे हो सकते हैं? तो इसलिए ये सब बराबर हैं, और ये बच्चों को बताना चाहिए कि ईश्वर तो एक है, धर्म तो एक है, धर्म तो केवल एक है। धर्म माने कर्तव्य, और प्राणी का एक ही कर्तव्य है, प्रभु की आज्ञाओं को जानना। राम की मर्यादा, कृष्ण का न्याय, बुद्ध की समता, यीशु मसीह की करुणा, मोहम्मद का भाईचारा, नानक का त्याग, बाहुल्ला की हृदय की एकता,
और वर्ल्ड की पार्लियामेंट, वर्ल्ड की गवर्नमेंट, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड की एक करेंसी वेट्स एंड मेजर एक हो। स्त्री और पुरुष समान है, न तो स्त्री छोटी है न पुरुष बड़ा है। साइंस एंड रिलीजन शुड बी इन हार्मनी। साइंस के जो प्रिंसिपल, साइंस शुड बी बेस्ड ऑन ethical principles of religion and religion should be scientific। तो ये सब नए नए नियम दिए बाउल्ला ने इस युग के लिए। तो इसलिए हमारी, आपने देखा कि वर्ल्ड पार्लियामेंट हुई। वर्ल्ड पार्लियामेंट में वो हुई, उसका विषय था स्पिरिचुअलिटी। किसी भी विषय पर हो सकती है। आजकल स्पिरिचुअलिटी या डिविनिटी की कमी होती जा रही है जीवन में। तो दीदी ने, बड़ी दीदी ने स्पिरिचुअलिटी पे वर्ल्ड की पार्लियामेंट की। पिछले वर्ष इन्होंने की थी फैमिली यूनिटी पर। फैमिली यूनिटी इज अ प्रायोरिटी। बच्चों के विकास में पारिवारिक एकता का बहुत बड़ा महत्व है। तो पिछले वर्ष उस पर की थी और इस पर इस वर्ष की है स्पिरिचुअल एजुकेशन। सर्वधर्म प्रार्थना की कि ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है। प्रार्थना की अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है, उसी की प्रार्थना है। विश्व एकता की प्रार्थना करी, वर्ल्ड की यूनिटी की। तो ये सब चीज़ें अभी उन्होंने पंजाब का और राजस्थान का, दो प्रांतों की संस्कृतियां दिखाई। तो हमारे यहाँ अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग हमारे यहाँ प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं, लेकिन विविधता में एकता दिखाई। तो ये कितना सुंदर एक कार्यक्रम था। तो उसके लिए हम बड़ी दीदी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। जब से बड़ी दीदी ने, ज्योति हमारी ज्योत्सना अतुल जी ने ये आरडीएसओ ब्रांच ज्वाइन की है, तब से पढ़ाई लिखाई के स्तर में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट किया है, पढ़ाई लिखाई के स्तर में। और यहाँ तक कि एक बच्चा आरडीएसओ का पहली बार पूरे इंडिया में लाखों लाखों बच्चों के बीच में से उसने चौथी पोजीशन पाई है। और इसके अलावा आपने देखा कि बच्चों के लिए उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम हो रहे हैं। माताओं ने सबसे पहले जो सर्वधर्म प्रार्थना की और ईश्वर की स्कूल की प्रार्थना की। इसके अलावा गीत, बहुत सुंदर सुंदर जो स्कूल के गीत हैं वो गाए। हमारे स्कूल में करीब 200 गीत हिंदी के और 200 गीत इंग्लिश के। एक किताब हमने छापी है, वो हर बच्चे के पास होगी। तो बच्चों को सिखाए जाते हैं, तो माताएं सीख लेंगी तो बच्चों को सिखा देंगी अच्छे अच्छे गीत। हमारी रोल एंड गोल की एक किताब हमने दे रखी है आपको, हर एक गार्जियन को। हमारे रिजल्ट के साथ ये रोल एंड गोल की किताब फ्री ऑफ चार्ज दी जाती है। बहुत सारी किताबें आपको दी गई हैं, जैसे इस मटेरियल एंड ह्यूमन एजुकेशन, तो ह्यूमन एंड डिवाइन एजुकेशन, जैसे स्पिरिचुअल एजुकेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ह्यूमन एजुकेशन की किताब दी गई है। इसी में एक रोल एंड गोल की किताब है, जिसमें करीब करीब 450 कोटेशन है। उसमें पेरेंट्स के लिए है, हस्बैंड के लिए है, वाइफ के लिए है, मदर के लिए है, और उसमें फैमिली के लिए है, टीचर्स के लिए कोटेशन है। तो बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन है। उसमें एक सर्वधर्म प्रार्थना भी है, लास्ट कवर पेज पर छपी है। सब धर्मों की शिक्षाओं का उसमें सार है। ये बाहुल्लाह की प्रार्थना है। बी जेनरस इन प्रॉस्पेरिटी, thankful in adversity. Be worthy of the trust of thy neighbor and look upon him
with a bright and a friendly face. Be a treasure to the poor, an admonisher to the rich, an answerer to the cry of the needy, a preserver of the sanctity of thy pledge. Be fair in thy judgment and guarded in thy speech. Be unjust to no man. Show all meekness to all men. Be as a lamp unto them that walk in darkness, a joy to the sorrowful, a sea for the thirsty, a heaven for the distressed, an upholder and defender of the victim of oppression. Let integrity and uprightness distinguish all thine acts. Be a home for the stranger, a balm to the suffering, a tower of strength for the fugitive. Be eyes to the blind and a guiding light unto the feet of erring. Be an ornament to the countenance of truth, a crown to the brow of fidelity, a pillar of the temple of righteousness, a breath of life to the body of mankind, an ensign of the host of justice, a luminary above the horizon of thy virtue, a dew to the soil of the human heart, an ark on the ocean of knowledge, a sun in the heaven of bounty, a gem on the diadem of wisdom, a shining light unto the firmament of thy generation, a fruit upon the tree of humility. तो ये प्रेयर है. इस प्रेयर को रोल एंड गोल की किताब में आपको दी गई है, हर साल दी जाती है रिजल्ट के साथ. ये लास्ट कवर पेज 24वें पेज पर है. ये फ्री ऑफ चार्ज किताबें सब दी जाती हैं. तो इसमें इस प्रार्थना को हर बच्चे को रटा दीजिए ताकि जीवन में जब भी उनके सामने कोई प्रश्न आवे तो वो इस प्रार्थना को पढ़ लें, उन्हें मार्गदर्शन मिल जाएगा. बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए ये प्रार्थना बहुत अच्छी है. तो सभी बच्चों को ये प्रार्थना रटवा दीजिए. और हमारे स्कूल की प्रार्थना है, आई बेयर विटनेस ओ माई गॉड दैट thou hast created me to know thee and to worship thee. मुझे दो काम के लिए उत्पन्न किया है. एक तो ये टू नो दी, मैं तुम्हें जानूं, तुम मेरे क्रिएटर हो, रचनाकार हो, मेरे जन्मदाता हो. तुम्हारी आत्मा मेरे अंदर है. शरीर तो भौतिक है, ये तो डिब्बा है, लेकिन ये शरीर चलता है आत्मा के कारण. तुम्हारी आत्मा मेरे अंदर है, तो मैं तुम्हारी शिक्षाओं को जानूं. हे परमात्मा, तेरी शिक्षाओं को मैं जानूं और तेरी पूजा करूं. पूजा करने के मानी क्या है? तेरी शिक्षाओं पर चलूं. परमात्मा ने शिक्षा दी है मर्यादा की, न्याय की, तो मैं मर्यादित जीवन व्यतीत करूं. मेरे जीवन में न्याय हो, मेरे जीवन में जाति पाति की भेदभाव ना हो. मुझे परमात्मा की बुद्ध की ओर से शिक्षा आई है. मेरे जीवन में करुणा हो, दया हो, यीशु मसीह के जरिए आई है. मेरे जीवन में सबको मैं भाई भाई मानूं, मोहम्मद साहब के जरिए आया. मेरे जीवन में त्याग का मूल्य हो, मैं त्याग भी करूं समाज के लिए. और मेरे जीवन में पवित्रता हो और एकता की भावना हो. तो ये सारे गुण परमात्मा के मेरे अंदर आए. इनकी ये पूजा है, इनका मैं पालन करूं. राम की मर्यादा, कृष्ण का न्याय, बुद्ध की समता, यीशु मसीह की करुणा, मोहम्मद का भाईचारा, नानक का त्याग, बाहुल्ला के हृदय की एकता और विश्व एकता और वर्ल्ड की पार्लियामेंट, वर्ल्ड की गवर्नमेंट. तो जिस जिस युग में जो जरूरत होती है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनाम, जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं उनका मैं परित्राण या कल्याण करूँगा. विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनका मैं विनाश करूँगा. विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, to institutionalize the religion, to give the new social laws required for the day. I will come again and again. मैं युग युग में आकर नए नए सामाजिक नियम देता हूँ, उस युग की आवश्यकता के अनुसार. तो ये सारे गुण परमात्मा के मेरे अंदर आए. इनकी ये पूजा है. परमात्मा ने शिक्षा दी है मर्यादा की, न्याय की, तो मैं मर्यादित जीवन व्यतीत करूं. मेरे जीवन में जाति पाति की भेदभाव ना हो. मुझे परमात्मा की बुद्ध की ओर से शिक्षा आई है. मेरे जीवन में करुणा हो, दया हो, यीशु मसीह के जरिए आई है. मेरे जीवन में सबको मैं भाई भाई मानूं, मोहम्मद साहब के जरिए आया. मेरे जीवन में
मर्यादा का नियम 7,500 वर्ष पूर्व आया, उस युग की आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि मानव जीवन अमर्यादित हो रहा था। यहाँ तक कि सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण और विद्वान रावण भी अमर्यादित हो गया। जब न्याय की व्यवस्था कमी हुई, दुर्योधन ने सारा राज्य हड़प लिया और पांडवों को 1 इंच भी जगह देने को तैयार नहीं था, अन्याय करने लगा। तो न्याय की स्थापना के लिए कृष्ण भगवान का आगमन होता है, महाभारत की रचना करते हैं और कौरवों को परास्त करते हैं, पांडवों का राज्य आता है। और जब जाति पाति बढ़ने लगी तो बुद्धि जी आए, उन्होंने कहा कि ये गलत है, सब एक ही जाति के, एक ही मिट्टी से बने, ऊंच नीच की भावना क्यों है? सब एक मिट्टी से बने, सभी प्राणी क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। 5 तत्वों से बना शरीर सबका इन्हीं 5 तत्वों से बना है। ये तो संसार की चीज है। तो ऊंच नीच की भावना गलत है। और यीशु मसीह आए तो करुणा का सागर बहाया, मानव जीवन में करुणा हो, दया हो। और मोहम्मद साहब आए तो कहा कि रब्बुल आलमीन, खुदा रब्बुल आलमीन है, इस धरती का रब है, परमात्मा, सृष्टि को बनाने वाला, एक खुदा के बंदे हैं सारे दुनिया के इंसान। तो भाई भाई का संदेश दिया। और जब नानक जी आए तो त्याग का दिया, और बावला आए तो एकता का दिया, और वर्ल्ड की यूनिटी का दिया। हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को आज की जो आवश्यकता है कि हमारे बच्चे बड़े होकर वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनाएं, तो हम ये बच्चों से कार्यक्रम करवाते हैं ताकि उनके मन में ये विचार अभी से आए कि हमें बड़े होकर तो इस दुनिया को रोटी कपड़ा मकान सबको मिलना चाहिए, इसका इंतज़ाम करना है। इसके लिए सब वर्ल्ड में व्यवस्था करने के लिए वर्ल्ड की पार्लियामेंट और वर्ल्ड की गवर्नमेंट, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड का न्यायालय, ये बनाना ज़रूरी है। तो युग युग की आवश्यकता के अनुसार परमात्मा दिव्य ज्ञान भेजता है। God reveals His words progressively and cyclically over a time through a series of divine teachers, and the teachings are tailored to suit the needs of different ages and places of their appearance. The basic purpose of all the religion is to safeguard the interest and promote the unity of the human race and to foster the spirit of love and fellowship amongst men. All the revealed books of God are unerring and collected wisdom. जितने भी दिव्य पुस्तकें एक परमात्मा से आई हैं, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, किताब एकदस, त्रिपिटक, ये सारी किताबें अनहरिंग हैं और कलेक्टेड विजडम। इनमें कोई त्रुटि नहीं है। सारे संसार के सारे विद्वान मिल जाएं और गीता और कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब में कोई कमी निकालना चाहें, नहीं निकाल सकते। कोई कॉमा फुल स्टॉप लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते। अनहरिंग है और कलेक्टेड विजडम है। परमात्मा ने सारी बुद्धिमत्ता उस युग के लिए, प्राणियों के लिए इसमें किताब में भर दी है। जो व्यक्ति गीता की गहराई में जाएगा वो बुद्धिमान बन जाएगा। जो व्यक्ति त्रिपिटक की गहराई में जाएगा वो बुद्धिमान बनेगा बुद्ध की शिक्षा में। जो व्यक्ति बाइबल की गहराई में जाएगा वो बुद्धिमान बनेगा। जो व्यक्ति कुरान शरीफ की गहराई में जाएगा वो बुद्धिमान बनेगा। जो व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहब की गहराई में जाएगा वो बुद्धिमान बन जाएगा। जो व्यक्ति किताब अक़दस की गहराई में जाएगा वो बुद्धिमान बनेगा।
ये सारी किताबें कलेक्टेड विजडम है। परमात्मा की बुद्धिमत्ता इन किताबों में है। परमात्मा ने मानव के कल्याण के लिए बुद्धिमत्ता की सारी बातें इन किताबों में भरी हैं, मनुष्य को बुद्धिमान बनाने के लिए, ताकि मनुष्य इन सब किताबों को जाने और बुद्धिमान बने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Heartfelt gratitude to you, respected sir, for your guidance and support always. Your thoughts, your journey has had a positive impact on all of us. And I'm sure it has had, and that is why I can see some parents clapping. A request for all of us to join in. You are the guide, you're the divine, you know this, you have a divine force, the driving force, which keeps all of us also going. And there are just two lines I wanted to share for him. गौर करिएगा, हिंदी में है। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध। भक्ति भाव मन में रखे, चलता रहे आबाद। थैंक यू। आपकी तालियां बता रही हैं कि आपको समझ में आया जो मैंने बोला। थैंक यू सो मच। एंड you have, again I repeat sir, you have this divine power in you which keeps all of us going. Thank you very much for your motivational words. And now we have amidst us a team that leads the Super Brain program. We have the trainer. Can we have you here, sir, please? Yeah. So we have the trainer of this program, Super Brain program, Mr. Chintamani Kaushik. The co-trainer, Mrs. Chitra Kaushik, who happens to be his wife, and we have his son, who's the co-trainer, Mr. Arnav Kaushik. Can you move up to the stage, please? Parents, can we welcome them by putting our hands together? Thank you very much. And today's performers are, I think he will brief you on what exactly. Why have the parents got up from their chairs? I will let them arrange the pre-primary children. We'll have their presentation after the presentation of Mr. Chintamani. So can we have all of you please be seated? Can I request you all? Please be seated. Pre-primary children can be arranged, but just make them sit down. Parents, please sit down. Can I request you all to please be seated? You can click photographs later on when the program begins. Or then we have them out of the auditorium then. All we can do. Please be seated. Thank you. We will wait till you are seated. Can the teachers please help? The performers with Mr. Chintamani are Aradhya, who happens to be from class 6. She is a student of Gomti Nagar 1 campus. Swastik Gupta, who is a student of Rajajipuram campus 1 and is in class 8th. Rudrak Shukla, who happens to be a student of Station Road campus and is a student of class 3. And Chinmay from class 6, who studies in GD Goenka. We welcome you all wholeheartedly. And I think for the further proceedings, Mr. Chintamani, it's over to you. You may just explain. And there's a small flyer which he has distributed. I think you're about to distribute. A cordless mic, please provide kara dijiye idhar. So this flyer would be available to you all. I think it's an interesting thing. Please lend him your ears. And after that, we have the pre-primary program. Please be seated. Again, I request you all, the ones who are standing in the auditorium, we have guests over here, and it's all the more important to give little amount of, you have to lend them your ears. Thank you so much. This group in the center, please be seated. I again request you. Hello. You can just start and you can wind up yourself. Now the teacher would be wrapping up after this, right? Thank you so much.
Thank you, ma'am. And first of all, I want to say thanks to Badi Didi and Mr. Gandhi sir to give me the great opportunity. अभी बहुत सारे नन्हे मुन्ने हमारे सामने हैं जो अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, और उससे पहले 5 मिनट में आपको बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मैजिकल परफॉर्मेंस अपने बच्चों की दिखाने वाला हूं. और ये परफॉर्मेंस आपको मैजिकल तो लगेगी देखने में, बट दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन पावर. और कोई भी बच्चा इस तरीके की एबिलिटी को डेवलप कर सकता है. सुपर ब्रेन की वर्कशॉप में आके कोई भी बच्चा ऐसी एबिलिटी डेवलप कर सकता है जो बच्चे यहां पे अभी परफॉर्म करने वाले हैं. जो कुछ भी हम अपनी खुली आंखों से करते हैं, ये सारे बच्चे वो सारी एक्टिविटी बंद आंखों से कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज ब्रेन पावर. और इस वर्कशॉप के बाद बच्चों को जो एकेडमिक बेनिफिट होता है वो उनकी मेमोरी पावर बहुत इन्हांस हो जाती है, बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव हो जाता है, बच्चों का लर्निंग टाइम रिड्यूस हो जाता है. तो ये सारी बेनिफिट्स उनको एकेडमिक में तो सपोर्ट करते ही हैं, इसके साथ साथ बच्चों की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर भी बहुत इन्हांस होती है, क्योंकि हम बच्चों के इस वर्कशॉप में राइट ब्रेन जो क्रिएटिव ब्रेन है उसकी पावर को इन्हांस करते हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर भी इन्हांस हो जाती है बच्चों की. और उस इमेजिनेशन पावर का आप एक लाइव अभी डेमो देखने वाले हैं कि आंख बंद करके कैसे बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर लेता है. और वो उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए होगा कि कोई भी पेरेंट प्लीज कम ऑन द स्टेज. कोई एक या दो पेरेंट आ जाएं फास्ट. एक या दो कोई पेरेंट या टीचर प्लीज कम ऑन द स्टेज. आई वॉन्ट टू शो समथिंग. बच्चे कुछ परफॉर्म करने वाले हैं, उसके लिए मुझे आप में से किसी की जरूरत है. आप में से कोई टीचर या पेरेंट आ जाए प्लीज. थैंक यू मैम. थैंक यू. मैम वी हैव सम कलरफुल बॉल्स. इन बॉल को आप टच करके स्मेल करके देखिए. दीज आर नॉर्मल बॉल्स. हम किसी भी कलर को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? देख के. और अगर हम देखें नहीं तो इन बॉल को क्या कलर को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? नहीं. ओके. तो मैम आप अपनी चॉइस से एक एक बॉल सब बच्चों को दे दीजिए फास्ट. मैम प्लीज कार्ड ले आइए. तो मैम ने अपनी चॉइस से एक एक बॉल बच्चों को दे दी है. ओके. जस्ट होल्ड ऑन. ओके, सब बच्चों को एक एक बॉल मिल गई है और ये बच्चे आंख पे पट्टी बांध के इस बॉल के कलर को बताएंगे. यस आराध्या. It's a green color ball. इट्स अ ग्रीन कलर बॉल. वेरी गुड. It's a yellow color ball. It's a yellow color ball. Very good. It is a purple color ball. Very good. It is a red color ball. It's a red color ball. कैसे बच्चों ने अपने इमेजिनरी ब्रेन के थ्रू उस कलर को रिकॉग्नाइज किया जो हम देख के ही बता सकते हैं. ओके. डबल कलर कार्ड. अब मैम अपनी चॉइस से कुछ कार्ड दे रही हैं बच्चों को, जिस पे कार्ड का कलर है और उस पे कुछ नंबर है अलग कलर से. राइट. मैम प्लीज आप टच करके बताइए, क्या ये छूने से पता चल जाता है कार्ड? नो.
मैम कह रही है छूने से ये नहीं पता चलता है कि कार्ड में क्या लिखा है, और बच्चे केवल छू सकते हैं उसको या स्मेल कर सकते हैं क्योंकि बच्चों की आंखें बंद हैं। अब ये अपने इमेजिनरी ब्रेन से कार्ड के कलर को और उस नंबर को कैसे बता पाते हैं, ये बच्चों से ही पूछते हैं। ऑल आर रेडी? ओके आराध्या। It's a green color card and a yellow color rectangle. ग्रीन कलर कार्ड, येलो कलर रेक्टेंगल। शो द कार्ड बेटा। ओके। It's a green color card and a yellow colored 3. शो द कार्ड। ओके, वेरी गुड। It is a blue color card and yellow 2. ब्लू कार्ड एंड येलो 2, वेरी गुड। यस। It is a yellow color card and green color 0. ओके, वेरी गुड। सो अब बच्चों को थोड़ा सा और हार्ड करते हैं, मल्टी कलर कार्ड देंगे। मैम के हाथ में बहुत सारे मल्टी कलर कार्ड्स हैं। मैम अपनी चॉइस से आप दीजिएगा कोई भी कार्ड। इसमें कुछ कलरफुल पिक्चर्स बनी हैं। ओके, तो अब बच्चों को कुछ कलरफुल कार्ड्स मैम ने अपनी चॉइस से दे दिए हैं। दिस टाइप ऑफ कार्ड्स। मैम ये कार्ड भी टच करने से क्या पता चलता है इस पे? ऑल आर स्मूथ कार्ड्स। ओके, तो मैम कह रही है स्मेल करने से भी नहीं पता चलता और टच करने से भी नहीं पता चलता है। फिर से इन बच्चों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इनको इस कार्ड में टच करने पे या स्मेल करने पे क्या समझ में आता है। चिन्मय, आर यू रेडी? ओके। It is a Christmas tree. It's a Christmas tree. Great. It is a golden fish. Golden fish. Very good. Red, yellow, blue, white ball. Red, blue, yellow, white ball. Very good. It's a bunch of grapes. Very good. Okay. अभी तक तो बच्चे हमारे कार्ड और बॉल पे दिखा रहे थे, तो कुछ हमारा लॉजिकल ब्रेन ऐसा कहता है कि कुछ बच्चों ने कार्ड पे प्रैक्टिस की होगी तो कार्ड टच करने से पता चलता होगा। मैं आपकी हेल्प से चाहूंगा कि कोई आप में से यहाँ पे 2 लोग मुझे कोई करेंसी नोट दे दें अपने पॉकेट से। आई एम श्योर वो वापस मिल जाएगा आपको। तो बच्चे उस करेंसी नोट के बारे में और उसका यूनिक नंबर के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। सो फटाफट मेरे पास 2 करेंसी नोट आ सकते हैं। ओके, 2 नोट आ गए मेरे पास। टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, अदरवाइज चारों बच्चे बताने वाले हैं, बट ओके। अब ये करेंसी नोट आपके बीच में से आया और मैंने 2 बच्चों को दे दिया है। उसका नंबर भी बताना है बेटा नोट का, राइट? सो स्वस्तिक, आर यू रेडी? ओके। It's a 500 rupee note and the unique number is 524239. 524239. Ma'am, it's right? Okay. Second. Yes, Rudrak. It is a 20 rupees note and 2539369. Ma'am, please again check the number. अब क्लैपिंग हो सकती है। अब मेरे पास फटाफट आप 2 मोबाइल आ सकते हैं। मोबाइल की इमेज को मैं प्लीज 2 मोबाइल मेरे पास आ सकते हैं। अब कोई प्रिंट नहीं, लास्ट मोबाइल की इमेज को, उसमें आपकी चॉइस की कोई फोटो। यस यस यस, 1-2 और आ सकते हैं। वी हैव 4 सुपर ब्रेन किड्स। यस, एनी फोटो, कोई फोटो उसमें लगा दीजिए और बच्चे उस फोटो को रिकॉग्नाइज करेंगे। आपका मोबाइल, आपकी चॉइस की फोटो और उस फोटो को बच्चे, यस यस, 2 मोबाइल आ गए, 1-2 और आ सकते हैं तब तक। यस, आर यू रेडी? It's a home screen photo. In this, there is a small child wearing a yellow kurta and white dhoti. He has a tika of Shivji, yellow color.
Very good. Yes, Swastik. It's a small child on a slide. The child is wearing a black color t-shirt and a cream colored shorts. It's a boy और उसकी ड्रेस का कलर भी डिफाइन कर दिया. Please take the mobile. अब लास्ट केवल एक कोई पर्सन यहां पे आने वाला है, आप में से कोई, और आराध्या उस पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस, उसकी ड्रेस को डिफाइन करेगी बिना देखे, बिना टच किए हुए. सो कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी आ सकता है यहां पे मेरे पास, जिसको आराध्या जिसकी ड्रेस को पूरा डिफाइन करे. एनीबॉडी? Okay, Aradhya. Somebody is there. Okay? So अब आराध्या डिफाइन करेगी कि कौन है उनके सामने और किस ड्रेस में है और किस पोज में है. Gender is a lady. She is wearing light blue and pink sari, blue bangles, red sandals, and she is standing like this. Great. So, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So, this is the power of our imaginary brain. हम अपने imaginary brain के through impossible चीज़ों को भी possible कर सकते हैं, और इसका benefit ये है कि बच्चों को इसमें academic बहुत support होता है. Basically, it's a supporting tool जो बच्चों को academic में तो benefit करता ही है, साथ साथ इसके अलावा और भी जो activities बच्चे कर रहे हैं, dance, painting, music, sports, किसी भी एक्टिविटी में जहां पे भी बच्चा परफॉर्म कर रहा है, वो इस वर्कशॉप के बाद बेटर परफॉर्म करने लगता है. सो इस वर्कशॉप के डिटेल आपको सीएमएस से मिल जाएंगे. कई सीएमएस के कैंपस में हम लोग इस वर्कशॉप को रन कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्रोशर भी अवेलेबल हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से ब्रोशर भी ले सकते हैं, जिसमें हमारा पूरा एड्रेस और फोन नंबर मेंशन्ड है. 5 से 15 साल का कोई भी बच्चा इस वर्कशॉप का बेनिफिट लेके अपनी ब्रेन पावर को इनहैंस कर सकता है. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, Thank you, sir, for such a wonderful presentation. I felt as if I am a part of a magic show. Childhood is the phase where one wishes if it could stay on. Now the little ones are already waiting for us on the stage, and they want to, rock us. Yes? So coming up, let's welcome the fantastic pre-primarians who will surely make us dance to their tunes.
Two little dicky birds sitting on a wall. One named Peter, one named Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. Two little dicky birds sitting on a wall. One named Peter, one named Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. Piggy on the railway shouldn't be there. Along came an engine. Piggy, take care. Hey, said the driver, get off the track. Piggy ran away then and never came back. Piggy on the railway shouldn't be there. Along came an engine. Piggy, take care. Hey, said the driver, get off the track. Piggy ran away then and never came back. Come along and dance, come along and dance. 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 Clap, clap and wave, clap and wave. 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 Come along and dance, come along and dance. 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 Now stamp your feet, stamp your feet. 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 Woo, woo. Woo, woo. Come along and dance, come along and dance. Come along and dance, come along and dance. What an energetic performance by the little ones. They deserve a thunderous applause. No wonder these little ones have enthralled us with their performance. In the words of Plato, music is a potent instrument than any other form of education because rhythm and harmony find their ways into inward places. Music is a word within itself, with a language we all understand. And when you hear music sung by a choir, it becomes a combination of C, cooperation, H, harmony, O, opportunity, I, involvement, and R, responsibility. Presenting Vicetra, the school choir before you.
Hello. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check.
What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They really say, God loves you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. What a musical bonanza! Put your hands together for such a beautiful performance. Truly a feast for the soul and the mind. Aptly said, music transcends all cultures. It is true that God cannot be present everywhere, so He has sent our dear parents to look after us. Their hands have always been full of guidance and love. So how can we hurt their feelings when they need us the most? Coming up next is a soul-stirring kawali, which conveys a message that it is a sin to hurt our dear parents. Nobody on earth can ever love us more than them. आज की नौजवान पीढ़ी से हमारी प्रार्थना है, अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाएं, अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं, ना दुखाएं। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मालिक मेरे आका
चल रहा था, मैंने देखा। किस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको, रहमते मौला से कुछ कम नहीं सा। सर ये गरम हो गया। हर मुसीबत से बचाया ये करम है कि नहीं, बोलना तुझको सिखाया ये करम है कि नहीं। कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता, कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। Parents, I'm still waiting for you to please settle down. Yes, I'm waiting for your claps too. Come on. A parent's love is something that no one can explain. It is made of deep devotion, sacrifice, and pain. Now, the most awaited event of the day. Heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. We now have the honoring ceremony of Miss Tanushree Vashne, the board topper with 99.2% and I request our respective founders, respected founder managers, sir, and most respected founder director, ma'am, to kindly come up on the stage for honoring the proud mother, grandmother, and the maternal uncle. Ms. Shweta Vashnoi is being garlanded by our respected principal, ma'am. And now is the moment. Come on, keep clapping. The proud mother will be weighed in fruits. And we have the teacher guardian, the driving force behind Ms. Tanushree Vashne's success, Mr. Suresh Pratap Singh. A huge round of applause for the teacher guardian too. They deserve a huge round of applause. Keep clapping, come on. What a proud moment. Just see the smile on the proud mother's face. Wonderful. Yes, I want to hear you. Keep clapping. You've made us proud, Tanushree, your mother, your grandmother, your maternal uncle.
Tanushree is a Samaritan and she has won many accolades for the institution. She has actively participated in extra co-curricular activities and has also led the prestigious Flag March on 26th of January. And Team RDSO outshone all the participant teams and came out with flying colors. Here's the Kodak moment. Keep clapping. When the lights Yes. are gone, shine, shine your way. And you may not know. We want more Tanushrees like this. Next year, more children on the stage. More honoring. Open road, but it's still dark. Build a fire from a spark and shine, shine your way. Feed the feeling in your heart. Don't conceal it. Many, many congratulations and heartiest wishes. No one can stop what has begun. You must believe when I say all of your tears will dry faster in the sun. Tanushree is being awarded with a medal by respected founder director ma'am. A proud moment indeed. A Kodak moment indeed. A moment which has to be cherished forever. And a reason why And you shine. a page has been added to the CMS RDSO There's so saga. much to learn, and now it's your turn to shine. Way to go, Tanushree. Many more to come. There's a feeling And deep heartiest inside. wishes. You can let it Kudos be to your you. guide to find your way. And Miss there's no time Tanushree's for us mother, to waste. Shweta Gotta Vishnoy, is take a being leap of faith and fly, honored fly with a sari. away. Don't have to walk. And his maternal uncle has been gifted with a shawl. All of your tears will dry faster in the sun. Her grandmother also has been gifted with a shawl. And Shine, shine the teacher guardian, Mr. Suresh Pratap Singh, he has been gifted with a shawl. A proud moment for CMS RDSO. Your hard work has truly paid off. Well done. It's such a beautiful sight. Anytime, anywhere, turn around and I'll be there to shine, shine your way. A photograph moment. Like a star Time for cheese. after darkest night, I'll shine. Shine your way. Now I can see. She has been awarded a gift check of rupees 1 lakh Show me the by the way. management. All of our tears will dry faster in the sun. Starting today. Shine, shine, shine. Come on, we can do it. Keep clapping. Shine, shine. That's what we say. Shine, shine, shine. Shine your way. The reason why you shine. Shine your way. All of our tears What a proud moment. In the sun. Shine your way. Now we have the meritorious students who have scored 90% and above. Very well done, children. Dawn, when the light's still gone. A great achievement. Shine your way, and you may not know where to go. This is all because of your hard work, Shine your your way. grit. Open Yes. road, but it's still dark. Build a fire from a spark and shine, shine your way. Feed the feeling in your heart. Don't conceal it, then you'll Constantly. start to find. You've constantly pushed yourself. Lot of hard work, lot of determination. what has begun. Keep working hard and be an inspiration for many. All of your tears will dry faster. Nobody is born a winner. To be a winner, one must plan to win, prepare to win, and expect to win. So here they are and they have proved it. They have nailed it.
Lot of congratulations. There's an open Our heartiest sky wishes. and a reason why you shine, shine your way. There's so much to learn, and now it's your RDSO time is proud to have you. shine your way. There's a feeling deep inside, you can let it be your guide to find. These children have left no stone unturned Time for us to waste, gotta take a leap to achieve their goal. fly away. Worked hard day and night, Don't have to walk, and they truly deserve the honor nothing came which is being bestowed on them. All of your tears will dry faster in the sun. starting today. Shine, 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 shine your way. Keep it up, children. And I'm sure you are an inspiration for many children who are seated in the auditorium. darkness is fading. We found our way to the light. It's such a beautiful sight. Your zealous efforts have borne fruits of success. And I'll be there to It could shine. not have been possible if you wouldn't have worked hard, Like a star if you weren't focused. after darkest night, I'll shine. Shine your way. Now I can see You are the one. sent here to show me the way. All of our tears will dry faster in the sun. Starting today. Shine, shine, shine. We're on our way. Shine, shine, shine. That's what we say. Shine, shine. And what an apt song played for these children. Keep shining, keep glowing as the sun. Spread your light everywhere. Be an inspiration for everyone. Lot many congratulations, celebrations. All set for a photograph. Just before the dawn, when the light's still gone, shine, shine your way. And you may not know where to go to shine, shine your way. Open road, but it's still dark. Build a fire from a spark and shine, shine your way. Feed the feeling in your heart. Don't conceal it, then you'll start to find your way. No one can stop what has begun. You must believe when I say all of your tears will dry faster. What a beautiful moment. So audience, what are you supposed to do? Resonate the hall with your claps. Shine your way. There's an open sky and a reason why you shine, shine your way. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. These words are absolutely true for the first lady of the institution, the mother figure of City Montessori School. Ma'am, you are an institution yourself. Now I request our most respected founder, Director Ma'am, to propose the vote of thanks. A huge round of applause for our most respected founder, Director Ma'am. Most respected parents, especially mothers, and most respected honorable principal and her worthy
टीचर्स, नजर नजर में उतरना कमाल नहीं। आपके लिए शेर पढ़ रही हूं मैं। नजर नजर में उतरना कमाल नहीं, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। ये है आपकी ब्रांच, हेडेड बाय ऑनरेबल प्रिंसिपल मिसेस ये यहीं की स्टूडेंट रही हैं, सीएमएस आरडीएसओ की ही स्टूडेंट आज आरडीएसओ की प्रिंसिपल हैं। My dear Mr. R.K. Singh, head of the Computer and Multimedia Department, and his cameraman, Mr. Kamal Zamani, for all the arrangements, Mr. Akhand and Gyan for his stage management, इन सबके धन्यवाद दे रही हूँ मैं आप सबकी तरफ से। Section in charges of school, pre-primary, primary, junior and senior sections, and all the mothers of RDSO campus। पूरा संडे बच्चों की सेवा में गया और आपकी प्रार्थना और वंदे मातरम। मार्शल्स जो थे हमारे बच्चे इतने स्मार्ट, अनुजा श्रीवास्तव डांस टीचर और संजीव मेहरा एंड SCS परिहार म्यूजिक टीचर्स, सोनू पांडे and Mr. Ashok Pal, PTIs of CMS, RDSO. JEs of Kanpur Road and RDSO, Mr. Abhishek and Mrs. Garima Gupta. And Mr. Alok for workforce. All the parents. आप ना होते तो हम ना होते। जोरदार, आपकी वजह से ही हम हैं। और हॉल में आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आज इस हॉल की शान बढ़ा दी आपने। और आरडीएसओ ब्रांच के सभी स्टाफ मेंबर्स और सारा सपोर्ट स्टाफ, आपके चरणों में बहुत बहुत वंदना, प्रणाम, धन्यवाद, जय जगत। और ये कहना चाहूंगी कि आप गांधी जी का भाषण सुन के पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मैंने तो सोचा मैं बहुत छोटा बताऊंगी। तो कहते हैं, आइंस्टाइन ने कहा है, try not to become a man of success, rather try to become a man of values। धन्यवाद, जय जगत। Gratitude to you, Didi, and thank you very much for that brief motivation. Your words are always, again, the driving force, I'll use this word, and in brief, whatever you say, I think if we imbibe a little bit of it, we would be better individuals. And the share which you said in my honor, I think, Didi, that very well belongs to you. बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है. So please put your hands together for the respected lady figure, the iron woman, I can say, who always teaches us through her experiences. And she is, there's another line, Didi, the poem which you always recite, that Nari ho tum, ari na reh sake, paas tumhare. So this is for all of us, all the women. Ari is, I think, the dushman.
So Nari ho tum, Ari na reh sake paas. So all the lovely mothers who participated today, who were a part of the program, and I'm really happy to see the hall that is jam-packed with all of you. Thank you so much that you came here today to witness this program and honor your children. Thank you once again. In the words of our most honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, I quote, "Fitness is not just a word, but a necessary condition for a healthy and a prosperous life. Live the life of a true warrior," I unquote. We now have a presentation before you portraying the value of being fit physically, mentally, and spiritually, which we derive from the three forms of fitness, that is yoga, karate, and aerobics. So get set, fasten your seat belts, and see the magic by the young little ones. सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है, आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। उम्मीदें ना दी टूटने, आशाएं ना दी छूटने, वृक्ष की तरह रहे अटल, योग ने ना दिया झुकने, प्राण प्राण का ये बंधन, जीव जीव में स्पंदन, विश्व एक परिवार है, योग को किया है वंदन। Aikudat, skip, re, aikudat, ich, ni, sam, chi, go, ruk, seis, hat, to, zo, nihonjuki, ich, ni, sam, chi, go, ruk, seis, hat, to, zo, upper block, 8,
knee, thumb, cheek, go, look, safe, touch, go, go. Formula tag. Hit, knee, thumb, cheek, go, look, safe, touch, go, go. Elbow attack. Hit, knee, thumb, cheek, go, look, safe, touch, go, go. Drop. Hit, knee, thumb, cheek, go, look, safe, touch, go, go. Hike bird, skip, break. Abusadamente. Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente, ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando. Ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, 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 bum. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dam 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 de guayarte, mami. Ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Dale y poner la regla, que no que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale para atrás. Échale, échale para adelante. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like your boom boom girl.
Parents, please settle down. Do I need to tell what you are supposed to do? Thank you. I now request everyone to stand up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, dear parents.